and the world. It's my privilege to welcome all the guests, eminent faculties, and research scholars who joined through Zoom platform and YouTube live channel on behalf of KSP Mandal Udgir, Mahatma Phule Mahavidyalaya Ahmedpur, and Department of History. I would like to welcome all the participants for this one-day interdisciplinary international online conference. I would like to welcome Chairperson of this conference, Dr. Vasant Biradar sir, Principal Mahatma Phule Mahavidyalaya Ahmedpur. I also like to welcome special invitee, Honorable Mr. Srirang Rao Patil, President, Kisan Shikshan Prasarak Mandal, Udgir. Another special invitee, Honorable Mr. Gnandev Zhodge, Secretary, Kisan Shikshan Prasarak Mandal, Udgir. I also welcome inaugurator of this international online conference, Honorable Professor Dr. Sen Pathak sir, International President, GSF, the University of Texas, America. I further would like to welcome Honorable keynote speaker of this international online conference, Honorable Professor Swami Jab Siddhananda, Head Department of Sanskrit and Philosophy, Vivekananda University, West Bengal. I also welcome Dr. Satish Kadam sir, President, All Maharashtra History Conference, Mumbai. And the most important guest we have and coordinator we have, Dr. Rajesh Mishra sir, Secretary, Global Sanskrit Forum, Cultural Ministry, Government of India, who is Assistant Professor, Department of Sanskrit, Nalanda Mahavihar. I also request all the participants who joined this international online conference through Zoom platform. Now, after this oral welcome, I move forward. As per our college tradition, we begin each and every function ceremony with the national anthem Vande Mataram. I request Dr. B.K. More sir to sing the Vande Mataram song. I request all of you to stand up. Vande Mataram, Vande Mataram, Sujalam Sufalam, Malayja Shitalam, Shamalam Mataram, Vande Mataram, Shubhrajoshna Pulakitayaminim, Pullakusumita Drumadala Shobhinim, Suhasinim, Sumadura Bhashinim, Sukhadam Varadam Mataram, Vande Mataram, Vande Mataram, Vande Mataram, Vande Mataram, Vande Mataram. Thank you. Thank you, sir. Thank you very much. I request Dr. B.K. More sir, who is convener of this
one-day interdisciplinary international online conference on Swami Vivekananda's contribution for India and the world. I request Dr. B.K. More sir to introduce our guests and for his introductory speech. Dr. More sir, over to you. Good evening, all dear brothers and sisters. Today, Global Sanskrit Forum Delhi, Swami Ramanand Tirth Marathwada University Nanded, and Mahatma Phule Mahavidyalaya Ahmedpur District Latur, Department of History are jointly organizing one-day interdisciplinary international online conference on Swami Vivekananda's contribution for India and the world. First of all, as a convener of this interdisciplinary international online conference, I welcome and thankful to one and all. Honorable Chairperson of this program and our inspiration, Principal Dr. Vasant Biradar Patil, Honorable Special Invitee of this program and President of Kisan Shikshan Prasarak Mandal, Sri Srirang Patil Ekambekar Sahib, Honorable Secretary of Kisan Shikshan Prasarak Mandal, Sri Jnanadevji Jhodge Sahib, inaugurator and our idol of this international conference, Professor Dr. Sen Pathak from Texas University, America, keynote speaker of this conference, Swami Japasiddhananda ji from Vivekananda University, Belur Math, West Bengal, chairperson of research paper reading session, and my friend Professor Dr. Satish Kadam sir, President All Maharashtra History Conference, Mumbai, research paper readers Dr. Kavita Tathed, Dr. Jyoti Ramod, Dr. Sushma Deshmukh, coordinator of this conference, Dr. Rajesh Mishra, my college vice principal Dr. D.D. Chaudhary, and all dear brothers and sisters who are attending this conference online mode. Dear friends, we organized this international conference due to the inspiration of Vivekananda's thoughts. Especially, Vivekananda's thoughts are very important for youths. And I respect value education given by Swami Vivekananda. Swami Vivekananda, a philosopher, preacher, a reformer, dedicated his whole life for the upliftment of humanity. In his dynamism of thoughts, he laid emphasis on the amelioration of body and soul for human excellence. The central theme of his inspiring speeches for the whole world was man. His growth, development, and fulfillment, work and more work to strive for excellence of body, mind, and spirit were conspicuous in all his teaching and preaching. In the present day world, in most of the countries, emphasis is laid on formal schooling rather than on man-making pursuits. The result is chaos and anarchy. Here, acquisition of wealth should not overshadow the fundamental human values. The chief aim of education should be to help the growing soul to draw out that in itself which is best and make the perfect for noble use. This attempt is perfection is part of the evolutionary game of the divine. Educational aim is consist in the development of the head, hand, and the heart. Education should help the individual to develop physically, mentally, morally, and spiritually. Such perfect ideal can be found in Indian thinkers like great thinker Swami Vivekananda, Shankaracharya, Buddha, Rabindranath Tagore, Mahatma Gandhi, Sri Aurobindo, and others. It should be remembered that unlike in the West, in India, education, life, and religion are intertwined. As such, the values aspects of education is kept in close touch with the aim of education.
After this, I am going to introduce our inaugurator of this international speaker of this international conference. I am going to introduce he is professor of genetics in the University of Texas, as well as he is MD in Anderson Cancer Center at Houston, Texas, in United States of America. Professor Sen is international president of Global Sanskrit Forum. He is professor, but as well as he always work for to spread Sanskrit language and Sanskrit books and our Indian culture in the whole world. He is great educationist, as well as he worked for downtrodden people. After that, I introduce the keynote speaker of this program, Swami Japa Siddhananda. We have Swami Japa Siddhananda as keynote speaker. I am also feeling very great that he is a great educationist. He have teaching experience more than 15 years. He is writer of 2 books, published more than 20 articles in international magazines. Faculty development programs, he attended 11, guest lectures attended, given more than 30. He had organized seminars, national level, international level in his university. And Swami Japa Siddhananda is head of Sanskrit and philosophy in Vivekananda University, Belur Math, West Bengal. Dear friends, as a convener of this program, I welcome one and all. Thank you. Thank you, Morris sir. Thank you for your introductory note and introducing the various guests. Our special invitee, our patron, due to some technical reasons, they couldn't join this online international conference, but they sent their message, best wishes for this conference. I would like to request Dr. P.D. Chilgar sir to read their message. Dr. Chilgar sir, kindly read the best wishes from our secretary Jnandevji Zhodge sahib. His message, please. ओके, आवाज आ रही है? Yes, yes, sir. हाँ, धन्यवाद। सबसे पहले महात्मा फुले महाविद्यालय अहमदपुर द्वारा आयोजित स्वामी विवेकानंद, इनका भारत और समस्त विश्व के लिए जो योगदान है, इस विषय पर आयोजित इस अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी में उपस्थित सभी महानुभावों का, विद्वत जनों का मैं सबसे पहले हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की इस अंतर्राष्ट्रीय आभासी पद्धति से चल रही अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी के अध्यक्ष हमारे महाविद्यालय के परम आदरणीय प्रधानाचार्य डॉक्टर वसंत बिरादर पाटिल साहब तथा स्पेशल यानी विशेष उपस्थिति के अंतर्गत हमारे किसान शिक्षण प्रसारक मंडल उदगीर के अध्यक्ष सम्माननीय श्री रंगराव जी पाटिल एकम्बेकर साहब तथा कुछ तकनीकी के कारण इस अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी में उपस्थित नहीं हो सके ऐसे हमारे आदरणीय मार्गदर्शक तथा किसान शिक्षण प्रसारक मंडल उदगीर के सम्माननीय सचिव ज्ञानदेव जी झोड़गे साहब तथा इस अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी के उद्घाटक परम आदरणीय प्रोफेसर डॉक्टर सेन पाठक जी, जो टेक्सास विश्वविद्यालय अमेरिका से यहाँ पर उपस्थित हैं, तथा बीज भाषक के रूप में उपस्थित प्रोफेसर स्वामी जप सिद्धानंद जी, संस्कृत एवं तत्वज्ञान विभाग के विभाग अध्यक्ष, स्वामी विवेकानंद विश्वविद्यालय बेलूर मठ, पश्चिम बंगाल, तथा इस अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी के संयोजक प्रोफेसर डॉक्टर बब्रुआन मोरे सर,
तथा उपस्थित सभी महानुभावों को मैं प्रणाम करता हूं, उनका शब्द सुमनों से स्वागत करता हूं। और मेरे ऊपर जो जिम्मेदारी है कि हमारे किसान शिक्षण प्रसारक मंडल के सम्माननीय सचिव साहब, जिन्होंने जो संदेश यहाँ पर दिया है वह संदेश आप तक पहुंचाना। तो उन्होंने जो संदेश दिया है वह संदेश मैं आपके सम्मुख यहाँ पर रखता हूं। किसान शिक्षण प्रसारक मंडल उदगीर द्वारा संचालित महात्मा फुले महाविद्यालय अहमदपुर तथा स्वामी रामानंद तीर्थ मराठवाड़ा विश्वविद्यालय नांदेड़ के संयुक्त तत्वावधान में स्वामी विवेकानंद के भारत तथा विश्व के लिए योगदान इस विषय पर इतिहास विभाग द्वारा आयोजित अंतरराष्ट्रीय ई संगोष्ठी में मैं किसान शिक्षण प्रसारक मंडल उदगीर का सचिव इस नाते आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। मुझे यह जानकर बहुत खुशी होती है कि हमारे महात्मा फुले महाविद्यालय के प्रधानाचार्य डॉक्टर वसंत बिरादार पाटिल तथा उनके मार्गदर्शन में आज तक कई अंतरराष्ट्रीय संगोष्ठियों का आयोजन किया गया और उसी का एक अगला सिलसिला यानी इतिहास विभाग द्वारा आयोजित यह अंतरराष्ट्रीय संगोष्ठी है। हमारे संस्था के इस महाविद्यालय महात्मा फुले महाविद्यालय की आयु केवल मात्र 20 वर्ष की है, लेकिन इस 20 साल में इस महाविद्यालय ने बहुत ही प्रगति की है और उसका पूरा श्रेय महाविद्यालय के प्रधानाचार्य डॉक्टर वसंत बिरादार पाटिल को जाता है। तथा आज के इस संगोष्ठी के संयोजक अत्यंत कृतिशील प्राध्यापक के रूप में उनको जाना जाता है, ऐसे प्रोफेसर डॉक्टर बब्रुआन मोरे सर, उनका भी मैं हार्दिक स्वागत करता हूं, उनको धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने यह संगोष्ठी यहाँ पर आयोजित की है। बहुत ही सुंदर विषय लेकर, क्योंकि आज स्वामी विवेकानंद के विचारों की आवश्यकता समस्त भारतवर्ष को ही नहीं बल्कि विश्व को है, जिन्होंने भारतीय संस्कृति का प्रचार प्रसार समस्त विश्व में किया है। और ऐसा विषय हमारे महात्मा फुले महाविद्यालय के इतिहास विभाग द्वारा रखा गया, इसलिए वे यानी बहुत ही अभिनंदन के पात्र हैं। तथा इस अंतरराष्ट्रीय संगोष्ठी के उद्घाटक, जिनका मैं सबसे पहले यहाँ पर नाम सुना हूं, प्रोफेसर डॉक्टर सेन पाठक जी, इनका भी मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। साथ ही साथ बीज भाषक के रूप में उपस्थित स्वामी जप सिद्धानंद जी, जो पश्चिम बंगाल से हैं, उनका भी मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। तथा इस अंतरराष्ट्रीय संगोष्ठी के लिए जिन जिन महानुभावों ने यहाँ पर शोधालेख प्रस्तुत करने वाले हैं, जिन्होंने प्रेषित किए हैं, उनका भी मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। तथा इस अंतरराष्ट्रीय संगोष्ठी को मैं पुनः से एक बार हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए मेरे विचारों को विराम देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। यह हमारे संस्था के जो सम्माननीय सचिव साहब हैं, आदरणीय ज्ञानदेव जी झोड़गे साहब, उन्होंने जो यह शुभ संदेश यहाँ पर दिया था वह मैंने आपके सम्मुख प्रस्तुत किया है। ये सौभाग्य मुझे संयोजक ने दिया, इतिहास विभाग ने दिया, हमारे महाविद्यालय के प्रधानाचार्य साहब ने दिया, इसलिए इन सभी के प्रति मैं धन्यवाद ज्ञापित करते हुए मेरे विचारों को विराम देता हूं। धन्यवाद। Thank you, sir. Thank you very much. Now, I request Dr. Sen Pathak sir, inaugurator of this interdisciplinary international online conference, to deliver his inaugural talk. Honorable Dr. Sen Pathak sir. Can you hear me? Yes, sir. Yes. Gurur Brahma, Gurur Vishnu, Gurur Devo Maheshwarah, Guru Sakshat Parabrahma, Tasmai Shri Guruve Namah। मैं थोड़ा सा अपने बारे में बताना चाहता हूं। With your permission, can I speak in Hindi, please? If you permit Yes, sir, me. why not? Yes, yes. I come from a very small village in eastern Uttar Pradesh, from a farmer's family, and all my education is from Banaras Hindu University. I did not go for a single day in any school or college or university in United States of America. I
came here in January 1970. Since then, I'm working in a cancer hospital, the University of Texas MD Anderson Cancer Center, which is second to none in the world. There are 22,000 doctors and scientists. They are devoting their time only for cancer, nothing else. जब मैं बचपन में पढ़ रहा था तो मिडिल स्कूल में 2 आदमियों का नाम मेरे को बताया गया। उन 2 आदमियों में महान विभूतियां स्वामी विवेकानंद जी का और सर जेसी बोस का। इन 2 महान विभूतियों का मेरे ऊपर बहुत असर पड़ा है जीवन में। मैं उनके कुछ इंस्ट्रक्शन को फॉलो करता आ रहा हूं। आई एम नाउ 82 years old and I still follow their instructions in my life. आप सभी महानुभावों को मैं आदर पूर्वक सादर प्रणाम करता हूं, जो हमसे वृद्ध हैं, हमारे उम्र में हैं और किसी भी तरीके से आप इस वेबिनार में सहयोग दे रहे हैं। स्पेशली I would like to encourage the younger generation. They are our future. उनको मैं बताना चाहता हूं कि हमारे में, हम इन भारतीय लोगों में ऋषियों के जीन हैं। उनका डीएनए हमारे बॉडी में है। ये बोलते हुए मेरे बॉडी में थोड़ा बड़ी फुर्ती आ रही है। कभी भी आप ये न सोचना कि आप किसी से किसी मामले में कम हैं। The only thing you have to do is work hard. आज जो वेबिनार है, जिसमें जो ग्लोबल संस्कृत फोरम न्यू दिल्ली और स्वामी रामानंद तीर्थ मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी नांदेड़ और महात्मा फुले महाविद्यालय अहमदपुर लतूर डिस्ट्रिक्ट के तत्वाधान में जो ये 1 day कॉन्फ्रेंस हम लोग मना रहे हैं, एंड वी आर गोइंग टू टॉक एंड लर्न फ्रॉम ईच अदर अबाउट स्वामी विवेकानंद जी's contribution to India and world. This is something great, and हम डॉक्टर राजेश मिश्रा जी को हृदय से धन्यवाद करते हैं कि वो समय समय पर हमको ऐसा अवसर देते हैं कि हम अपने भारतीय भाई बहनों से मिल सकें और उनसे कुछ सीख सकें। हमने बहुत विज्ञान के ऊपर यहाँ काम किया है आप लोगों के आशीर्वाद से, लेकिन जो विज्ञान है, जो हम आज विज्ञान कर रहे हैं, इट इज बेस्ड ऑन अपराविद्या। हमारे धर्म शास्त्र में जो बताया गया है, जो विवेकानंद जी ने बताया है, वो बेस्ड ऑन पराविद्या, transcendental knowledge. That is what we all should have. And especially I want to encourage the younger generation who are going to speak on their research or will be doing research. Please believe that transcendental knowledge is much better, and we will survive only on transcendental knowledge. मिश्रा जी ने मेरे को बताया कि मैं थोड़ा सा बोलूं इस ग्लोबल संस्कृत फोरम के बारे में। तो मैं इतना बताना चाहता हूं कि करीब 2 साल से मैं मिश्रा जी से कनेक्टेड हूं। आई हैव नेवर मेट हिम, बट आई हैव लॉट्स ऑफ रिस्पेक्ट फॉर हिम। पहले उन्होंने राष्ट्रीय संस्कृत मंच शुरू किया दिल्ली यूनिवर्सिटी से, और अब ग्लोबल संस्कृत फोरम शुरू किया है। मेरी इतनी ही प्रार्थना आप सब लोगों से है, हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि मिश्रा जी के प्रोजेक्ट को आप सब हृदय से हेल्प करें, जिस तन मन धन जैसे भी हो सके। और हमने ये प्रण लिया है कि जब तक हम जीवित रहेंगे, अमेरिका से उनको हर तरीके का हेल्प देते रहेंगे। आपको मालूम होगा कि he has also started a journal, और उसमें कंट्रीब्यूशन आप दे सकें तो बहुत बड़ी बात होगी। जो स्वामी जी का जहां तक प्रश्न है, मैं ज्यादा नहीं जानता हूं क्योंकि मैं विज्ञान का विद्यार्थी रहा हूं, और इस
वेबिनार में सम्मिलित होकर I am waiting for the lecture of Swami Japsiddhanand ji, who is the keynote speaker. I am going to learn from him. I am very familiar with Calcutta because my father used to do business in Calcutta. He was a truck driver in Bagmari market. So I have been going to Calcutta from high school onwards till I came to America. So मैं कलकत्ता से बहुत अच्छी तरह परिचित हूँ और मुझे बड़ी खुशी लगी है कि कलकत्ता के ही दो सुपुत्र स्वामी विवेकानंद जी और सर जेसी बोस जिन्होंने मुझे गाइड किया है, मैं उनके रास्ते पर चलने का प्रयत्न कर रहा हूं अमेरिका में। कुछ शब्द हैं स्वामी विवेकानंद जी के, उनको मैं पढ़ना चाहता हूं क्योंकि उन्होंने मेरी लाइफ में गाइड किया है और वो शब्द ऐसे हैं। It is very easy to search for faults, but the characteristic of a saint lies in looking for merits. This is said by Swami Vivekananda ji. And he also said, get up and set your shoulders to the wheel. How long is this life for? As you have come into this world, leave some mark behind. Otherwise, where is the difference between you and a tree and stones? They too come into existence, decay and die. Stand up and fight. Not one step back. That is the idea. Fight it out. Whatever comes, let the stars come from the spheres. Let the whole world stand against us. Death means only a change of garment. What of it? Thus fight. You gain nothing by becoming cowards. Taking a step backward, you don't avoid any misfortune. You have cried in all the gods in the world. Have miseries ceased? No, the gods come to help you when you have succeeded. So what is the use? You are infinite, deathless, birthless, because you are infinite spirit. It does not fit you to be a slave. Arise, awake, stand up and fight. This is what we learned from Swami Vivekananda ji. And today I'm very fortunate to learn some more from our keynote speaker. At the end, I welcome you all to this conference and make use of this. Sarve bhavantu sukhina, sarve shantu niramayah, sarve bhadrani pashyantu, ma kaschid dukbhag bhavet. Om Shanti, Shanti, Shanti. Thank you. Thank you. Thank you very much, sir. Thank you for your inaugural speech. Now, after this inaugural speech, we are going to publish the book Vishwa Vijate Swami Vivekananda, Champion Swami Vivekananda. We are going to publish this book online. Dr. Prashant Birada, sir, please. Share the screen. Okay, sir. I have shared. हाँ सर शेयर केलेली आहे. Yes, here is the book which we are going to publish online here. Vishwa Vijate Swami Vivekananda, World Champion Swami Vivekananda. Thank you, sir. Thank you for sharing the screen. Thank you very much. Now, after this inaugural
session, we are moving forward towards the another session in which Professor Dr. Swami Japsiddhananda, who is head of Sanskrit and Philosophy Department, Swami Vivekananda University, West Bengal. I request Honorable Keynote Speaker, Dr. Swami Japsiddhananda, to deliver his keynote address. Over to you, sir. Am I audible? Yes, sir, yes. Shri Gurubhyo Namaha Harihi Om Yathagnirdahika Shakti Ramakrishne Sthita Hiya Sarva Vidya Swarupantam Saradam Pranamamyaham. Om Namah Shri Yati Rajaya Vivekananda Suraye Satchit Sukhaswarupaya Swamine Tapaharine. Om Namo Bhagavate Ramakrishnaya. Good evening all. I convey my regards to all the respected scholars, teachers, and distinguished guests here. My love and best wishes to all the students of Global Sanskrit Forum, Delhi, Swami Ramananda Tirtha Marathwada University, Nanded, and also Mahatma Phule Mahavidyalaya, Ahmadpur, Latur. My special thanks to Dr. Vasant Biradar, Principal, Mahatma Phule Mahavidyalaya, and Dr. Babruwan More, Head of the Department of History, Mahatma Phule Mahavidyalaya, for giving me this opportunity to share some thoughts on the topic Swami Vivekananda's contribution to India and the world. The inaugurator has put in a nutshell his inspiration received from Swamiji. We thank him for his nice and short talk. I would like to present this topic, Swami Vivekananda's contribution to India and the world, in 3 points. First, message to the youth. Second, his thoughts on education. And third, his message regarding religion, practice of religion. In each of these, we will consider 2 points. For the development of India, Swamiji gave several inspiring messages to the youth of India. One is his gospel of manliness. That is his message of strength. Swamiji said, the older I grow, the more everything seems to me to lie in manliness. This is my new gospel. Later on, in different places,
especially in India when he traveled from Colombo to Almora on his return from his visit to the West. He gave rousing lectures and inspired men everywhere. At one place he said, "If you, my sons, can proclaim this message to the world, Klaibyam masmagamah partha, then all this disease, grief, sin, and sorrow will vanish from off the face of the earth in 3 days. All these ideas of weakness will be nowhere. Now it is everywhere, this current of the vibration of fear. Reverse the current, bring in the opposite vibration, and behold the magic transformation." This is what Swamiji said. What does he mean by this? Swamiji wanted that the youth will imbibe strength, physical, intellectual, moral, and spiritual. Swamiji was very fond of this shloka in the Gita, which comes in the 2nd chapter, Sankhya Yoga. What is the shloka? Klaibyam masmagamah partha naitatvayupapadyate kshudram hridaya daurbalyam tyaktvottishta parantapa. Swamiji said, if one reads this one shloka, one gets all the merits of reading the entire Gita. For in this one shloka lies embedded the whole message of the Gita. That is why he always said that strength is what we want in life. Strength is life and weakness is death. This is the message he gave to the youth. The second message, which the youth very much need, especially the modern youth badly need this message. What is that? It is the message of character building. Character, charitriya, charitra nirmana. Sheela nirmana. About this, Swamiji said, in his conversations, it is recorded in the 7th volume of the complete works of Swami Vivekananda. In one of his conversations, Swamiji said, "Do you see, simply by the observance of strict brahmacharya, continence, all learning can be mastered in a very short time. One has an unfailing memory of what one hears or knows but once. It is owing to this want of continence that everything is on the brink of ruin in our country." And Swamiji, they made this comment nearly 150 years ago, 140 years, even less than that. Almost a century ago, the Swamiji made this statement, and even today, the youth are yet to learn this lesson. What is the lesson? The lesson of pure character. In this connection, I would like to make one remark or one small suggestion. When you hear to the word brahmacharya,
men need not become afraid that their children will go away as sannyasis. No, it is a wrong idea. In the Indian religion, the religion of Vedas, better put, the religion of Vedanta, every boy and every girl is supposed to practice brahmacharya at least until he or she completes education. That is why in the Indian culture, student life is known as brahmacharyashrama. Until one enters grihasthashrama, brahmacharyashrama is compulsory to every being, every human being in Indian religion. This lesson Swamiji taught by his own example as well as by inspiring men and women throughout India. Our youth should learn this very important lesson of continence, disciplined life, pure character. If this is taken care of, education will come by itself. Whatever excellence they wish to achieve will come easily if brahmacharya is practiced during the education period, during the student life. So these are the 2 points regarding the message to the youth given by Swamiji. First one, the message of strength, the gospel of manliness. Second, the character building. Now, we'll go to the second thought or the second contribution of Swamiji to India, education. Swamiji said, all evil is due to the lack of education. And education is the panacea to all evil. But the question is, what sort of education will be helpful for the all-round development of both individual as well as the nation? Swamiji said, man-making education is needed. I quote, make your nerves strong. What we want is muscles of iron and nerves of steel. We have wept long enough. No more weeping, but stand on your feet and be men. It is a man-making religion that we want. It is man-making theories that we want. It is man-making education all round that we want. In another lecture, Swamiji said, I quote, education is not the amount of information that is put into your brain and runs right there undigested all your life. We must have life-building, man-making, character-making assimilation of ideas. If you have assimilated 5 ideas and made them your life and character, you have more education than any man who has got by heart a whole library. Here, Swamiji actually has quoted a shloka, a subhashita. Yatha kharash chandana bharavahi bharasya vetta natu chandanasya. The meaning is, the ass carrying its load of sandalwood knows only the weight and not the value of the sandalwood. And again I quote,
If education is identical with information, the libraries are the greatest sages in the world and encyclopedias are the rishis. The ideal, therefore, is that we must have the whole education of our country. We must have the whole education of our country, spiritual and secular, in our own hands. And it must be on national lines through national methods as far as practical. Unquote. We know Swamiji said this when we were not yet independent. At that time, he said, the whole education of our country, spiritual and secular, it should be in our own hands. And do you feel today we have the full control over education? Not so. To some extent, we have control over the educational system, but still we are highly biased and heavily influenced by the methods from foreign countries. This we have to root out. The foreign methodology will not suit to the Indian background, in the Indian situation, because the main difference is this. In other countries, education and character do not go together. But in India, education and character go together. If a man has education and no character, he has no value in the Indian eye. If a man has pure character and less education, even then he is respected, revered. So, Swamiji said, both are necessary. Western science plus Vedanta, both are necessary. This is the message Swamiji gave regarding education. The second point regarding education is concentration. Swamiji said, I quote, there is only one method by which to attain this knowledge. This knowledge means any knowledge. That which is called concentration. The chemist in his laboratory concentrates all the energies of his mind into one focus and throws them upon the materials he is analyzing, and so finds out their secrets. The astronomer concentrates all the energies of his mind and projects them through his telescope upon the skies and the stars and the sun and the moon, give up their secrets to him. The more I can concentrate my thoughts on the matter on which I am talking to you, the more light I can throw upon you. You are listening to me, and the more you concentrate your thoughts, the more clearly you will grasp what I have to say. How has all the knowledge in the world been gained but by the concentration of the powers of the mind? The world is ready to give up its secrets if we only know how to knock, how to give it the necessary blow. The strength and force of the blow come through concentration. There is no limit to the power of the human mind. The more concentrated it is, the more power is brought to bear on one point. That is the secret. Unquote. This much about education. The third point I mentioned was religion. Swamiji's message on religion. Here we will take up only 2 points. First one, Swamiji said, go back to the Upanishads. Second one, message of peace and love.
These 2 points we need to remember when we practice religion. What are the 2 points? Always follow the Upanishadic method. Second, always protect the mode of peace and love in whatever you do. Go back to Upanishads. Swamiji said, go back to your Upanishads, the shining, the strengthening, the bright philosophy, and part from all these mysterious things, all these weakening things. Take up this philosophy. The greatest truths are the simplest things in the world, simple as your own existence. The truths of the Upanishads are before you. Take them up, live up to them, and the salvation of India will be at hand. Swamiji said this long ago, but even today we need this. As an independent nation also, we need this very much. What is the message? Take them up. What? Take the truths of the Upanishads and live up to them, and the salvation of India will be at hand. Now, you might be interested to know, if Swamiji gave so much importance to Upanishad, what is there in that Upanishad? I will just quote 2 mantras. Upanishads explain who you are, what is your true nature. This is very much needed today. Kathopanishad says, Najayate mriyate va vipaschit nayang kutaschin nababhuva kaschit ajo nitya shashvatoyam purano nahanyate hanyamane sharire. The self, the Atman, which is of the nature of consciousness, is neither born nor dies. It did not originate from anything, nor did anything originate from it. It is birthless, eternal, undecaying, and ancient. It is not injured even when the body is destroyed. And such is your real nature. This we have to remember always. What is our true nature? And again, Mundakopanishad, it puts in a different way. It says, this Atman or Brahman is bright, brighter than the sun. It is all light, Swayam Prakasha. This mantra is found both in Mundaka Upanishad and Kathopanishad. It is like this. Na tatra suryo bhati na chandra tarakam nema vidyuto bhanti kuto yamagnihi Tameva bhantam anubhati sarvam tasya bhasa sarvamidam vibhati. There, in the Brahman, in the Atman, the sun does not shine, neither do the moon and the stars, nor do these flashes of lightning shine. How can this fire do so? He is shining, all these shine. Through this luster, all these are variously illumined. Such is our real nature. It is because our Atman shines, the sun is able to shine. Such a wonderful message is given in the Upanishad, such a bold message. Swamiji drew our attention towards these truths put forward in the Upanishads and said, if you live up to them, the salvation of India will be at hand. That is why Swamiji often said,
Religion is realization, not talk, not doctrine, not theories, however beautiful they may be. It is being and becoming, not hearing or acknowledging. It is the whole soul becoming changed into what it believes. That is religion. In this connection, Swamiji warned the Hindus. I mean, Hindu means the Upanishad age Hindu, not the modern anything which is limited to some group, not that. So let me better use the word Indians. The secret of a true Indian's character, Swamiji said, lies in the subordination of his knowledge of European sciences and learning, of his wealth, position, and name to that one principal theme which is inborn in every Indian child, the spirituality, the purity of the race. This is the first point regarding religion. The second point. Second point is the message of peace and love. If peace and love do not ensue from the practice of religion, if you don't get peace of mind and loving feeling towards every living being, then your practice of religion is wrong. It is not correct. There is some serious mistake somewhere. So this is the test. Swamiji, when he traveled in the West, when he was in England, when he was in London, a young lady asked Swamiji, "What have you Hindus done? You have never even conquered a single nation." Swamiji quickly replied, "That is our glory. To my mind, that is the argument why our religion is truer than any other religion, because it never conquered, because it never shed blood, because its mouth always shed on all. Its mouth always shed on all words of blessings, of peace, words of love and sympathy." Swamiji again said, "Religion does not want cohorts to march before its path and clear its way. Wisdom and philosophy do not want to be carried on floods of blood on bleeding human bodies. Do not march with violence, but come on the wings of peace and love, and that has always been so." Such is the religion of India. We have to remember these important points. Finally, I would like to bring to your notice two more points regarding the contribution of Swamiji to the entire world. The earlier 3 points which I mentioned, it was especially in the context of India. The 3 points are message to the youth, and there we saw 2 points, the gospel of manliness and character building. Second point was education. In education, Swamiji said we want a man-making, character-building education, first point. Second, concentration should be practiced, and that is the key to all knowledge. Third point was religion. In religion, we considered 2 points. First one, live up to the ideals of the Upanishadic truths. Second, always practice peace and love. If you give up this, then there is some serious mistake in your practice of religion. Now, Swamiji's contribution to the world, we will just see 2 points. First point, actually his message is multidimensional. In this short span of time, we will just see 2 messages. First one, the message of truth. And second one is the message of universal religion. First point is the message of truth. Swamiji said,
truth should be the basis of all development. If truth, satyam, if this is given up, mankind is going towards destruction. How much ever advancement may be made in science and technology, if truth is not there at the back, man is definitely going towards his own destruction. Swamiji said, truth does not pay homage to any society, ancient or modern. Society has to pay homage to truth or die. Society should be molded upon truth, and truth has not to just adjust itself to society. If such a noble truth as unselfishness cannot be practiced in society, it is better for man to give up society and go into the forest. That is the daring man. There are two sorts of courage. One is the courage of facing the cannon, and the other is the courage of spiritual conviction. Swamiji again said to his Western audience, I quote, "What good is it to talk of the strength of your muscles, of the superiority of your Western institutions, if you cannot make truth square with your society, if you cannot build up a society into which the highest truth will fit? What is the good of this boastful talk about your grandeur and greatness if you stand up and say, this courage is not practical? Is nothing practical but pounds, shillings, and pence? If so, why boast of your society? That society is the greatest, where the highest truths become practical. That is my opinion. And if society is not fit for the highest truths, make it so, and the sooner the better." Unquote. This is how Swamiji delivered his bold message of truth and religion. Regarding religion, nowadays there is so much of contradiction, so much of quarrel, so much of unrest in the world. In this context, it is very important to note what Swamiji said. He said, what I want to propagate is a religion that will be equally acceptable to all minds. It must be equally philosophic, equally emotional, equally mystic, and equally conducive to action. If professors from the colleges come, scientific men and physicists, they will quote reason. Let them have it as much as they want. And if devotees come, they would like to have emotions, devotion. Let them have, like this, Swamiji went on. Devotees need emotional mode of practice, and the yogis, mystic practices. And then those who are active by nature, they want action, more of performance, worship. Thus, Swamiji said, all these faculties of man, human faculties, the faculties of the mind, should be engaged by the religion. That will be the universal religion. In a nutshell, Swamiji's message can be put thus: each soul is potentially divine. The goal is to manifest this divinity within by controlling nature, external and internal. Do this either by work or worship or psychic control or philosophy, by one or more or all of these, and be free. This is the whole of religion. Doctrines or dogmas or rituals or books or temples or forms are but secondary details. With this, I end my talk. Swamiji's messages, his words, and more importantly, his own life itself is a message for humanity today.
if our students, the boys and girls in schools and colleges, take up serious study of Swamiji's life and message, their life will be blessed. Let us pray to the Almighty. Let us pray to God that we will be able to imbibe the message given by Swamiji in such a bold manner. Om Shanti 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 Harihi Om Tat Sat Shri Rama Krishna Arpanamastu. Jai Ram Krishna. Thank you, sir. Thank you for your inspirational and very impressive keynote address. You have delivered the philosophy of Swami Vivekananda in a simple, humble, and in a melodious voice. Thank you for your speech. Thank you, sir. Dear participants, respected dignitaries, research scholars, we are now moving towards the next session of this international conference. And the next session will be paper presentation session. And the chairperson of this paper presentation session will be Professor Dr. Satish Kadam, sir. I request Dr. B.K. More, sir, to introduce the chairperson of this session, as well as to introduce the paper readers. Over to you, sir. Yes, sir. I am feeling immense pleasure to introduce chairperson of paper reading session, our friend Dr. Satish Kadam, who is president of All Maharashtra History Conference, Mumbai. And his work in history is notable. Dr. Satish Kadam education is MA, B.Ed, PhD. He is head of the Department History in Yeshwantrao College, Durgapur, Dharamshi. Dr. Kadam attended international conferences in Nepal, Sri Lanka, and so many countries. He has experience of traveling all over the world. Dr. Kadam had published research papers more than 50. Research project also he had completed from UGC. Dr. Satish Kadam is research guide in Dr. Babasaheb Ambedkar Marathwada University and as well as in Tilak Vidyapeeth, Pune. Dr. Kadam had written 4 books: अष्टयोगात शिवराय, मराठ्यांचा इतिहास, मराठीकालीन निवडक संदर्भ, and असे झुंजलो आम्ही. Dr. Satish Kadam had organized state level, national level, international level conferences, online and offline in his college so many times. As well as Dr. Kadam have done deep research work in history, especially regarding Hyderabad freedom struggle, Tulzapur Bhavani temple, dynasty of Januji Bhosle, as well as Raje Nimbalkar dynasty of Usmanabad. As well as Dr. Satish Kadam had written series articles in newspapers, Kahani Tulza Bhavanichi, असे झुंजलो आम्ही, अष्टयोगात शिवराय. After that, there are 3 research paper readers in this session. I am going to introduce them. First of all, I am going to introduce Dr. Kavita Tated from Loknayak Babuji Ani Mahila
Yavatmal. Her education is MA History, MA Sociology, PhD, as well as she is in charge principal, always as she had done in IQAC coordinator and NAP coordinator work in her college. Total number of books written to Jain Sanskriti mein Nari Pratima, as well as Jain Sanskriti Paripraksha mein Bharatiya Nari. Total number of articles written and published are more than 40. Total number of conferences attended: international level 12, national level 40, state level 10. Total number of lectures delivered in conferences: international level 2, national level 6, state level 5, as well as she is PhD guide in Amravati University. One student awarded PhD, as well as Dr. Tathed working as a member of editorial board of Lok Nayak, working as joint secretary in the executive committee of Maharashtra Itihas Parishad, working as Mahila Pramukh in district Itihas Sankalan Samiti Yavatmal and Mahila Sah Pramukh of Prant Itihas Sankalan Samiti, participated in and reported for e-learning study material for history students, convener of PhD research center also. After that, next research article reader is Dr. Sushma Deshpande from Aurangabad. She is working in Dr. Indirabai Bhaskar Pathak College, College, Aurangabad. She has 12 years experience in history teaching. Her education is MA History, MA Sociology, B.Ed, SET and PhD. 3 books are written, as well as participated in national level and international level conferences. She had completed minor research projects, major research projects, as well as organized so many programs in her college as HOD of history. And last paper reader is Dr. Jyoti Ramod from Bapuji Gholab College, Pune. Her education is MA, B.Ed, MPhil, PhD, SET. She had completed her PhD in cultural history of scheduled tribes in Nanded districts. She had given so many speeches in all over Maharashtra, especially in Pune, Nashik, Bombay, Thane. She had written 2 books. She had written more than 50 articles. So I request Akde sir, now the mic over you. Thank you, sir. Thank you for introducing the chairperson of this session and the paper readers. Now, I request chairperson of this session, Dr. Satish Kadam sir, to take the charge of this session. Dr. Satish Kadam sir, Honorable Dr. Satish Kadam sir, please take the charge of this session. आवाज आ रही है सर? मेरा आवाज आता है? Yes sir, yes. ओके, थैंक यू. Yes. महात्मा फुले महाविद्यालय अहमदपुर, जिला लातूर, उनकी ओर से आयोजित स्वामी विवेकानंद, उनका भारत और दुनिया के लिए योगदान, इस अंतर विद्याशाखीय अंतरराष्ट्रीय परिषद में आप सबका यहाँ पर मैं स्वागत करता हूँ. पहले तो मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि मुझे इस ऐसे बड़े प्रोग्राम में आने का न्योता दिया. आपके महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर वसनरावजी बिरादार सर, उप प्राचार्य डीडी चौधरी सर, जिन्होंने हमको यहाँ अवगत किया, वह डॉक्टर बीके मोरे सर, इनकी अनुमति से मैं इस सत्र को शुरू कर देता हूं. यहाँ पर मुझे 3 रिसर्च पेपर या शोध निबंध यहाँ पर जो पेपर आए हैं, उनमें पहला नाम जो है हमारे सहकारी जो हिस्ट्री कॉन्फ्रेंस के एक मेंबर हैं, डॉक्टर कविता ताथेड़ मैडम को मैं अनुमति देता हूं कि आपका जो पेपर है वो पेपर प्रेजेंट करें. डॉक्टर ताथेड़ मैडम.
तातेड़ मैडम है क्या? दूसरा unmute your Kindly unmute yourself, madam. सर आवाज आ रही? Okay. हाँ सर Yes, मैडम, sir. हाँ हाँ जी जी नमस्कार। अंतरराष्ट्रीय अंतर्विद्या शाखीय संगोष्ठी में सम्मिलित समस्त महानुभावों को मेरा सादर नमन। इस सत्र के अध्यक्ष माननीय डॉक्टर सतीश कदम सर को भी मेरा नमन। आज मैं आपके सम्मुख शाश्वत जीवन मूल्य के संदर्भ में स्वामी विवेकानंद की विचारधारा इस संदर्भ में अपने विचार रखना चाहूंगी। शाश्वत जीवन मूल्य क्या है? यदि इसका अध्ययन किया जाए तो सबसे पहले हमें मूल्य शब्द को समझना होगा। शाश्वत मूल्य और मूल्य इसे परिभाषित करने के लिए मैं कहना चाहूंगी, जो मूल्य चिरंतर टिकने वाले होते हैं उन्हें शाश्वत मूल्य कहते हैं। इसे कोई जीवन से नहीं छुड़ा सकता है। मनुष्य जितना खुद के जीवन में स्वीकारेगा उतना ही इस मूल्यों के माध्यम से उसका व्यक्तित्व निखर जाएगा। हर मनुष्य अपने जीवन में कुछ उद्देश्य लेकर जीता है। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए कुछ उसूल बनाता है और यही अच्छे उसूल या नियम उसके जीवन के शाश्वत मूल्य बन जाते हैं। मनुष्य के जीवन में इस प्रकार के शाश्वत मूल्यों के क्रियान्वयन की शुरुआत परिवार और विशेष रूप से माता पिता से होती है और इस तरह के शाश्वत मूल्य जीवन भर उसके साथ चलते हैं। और स्वामी विवेकानंद जी की विचारधारा में इन शाश्वत मूल्यों के माध्यम से हम अपने जीवन को किस तरह से सफल बना सकते हैं, यही मेरे पेपर का उद्देश्य है। शाश्वत मूल्यों के संदर्भ में विवेकानंद जी का एक विचार जो मुझे अधिक प्रासंगिक लगता है, मैं आपके सम्मुख प्रस्तुत करना चाहूंगी। वे कहते हैं, हम वही है जो हमारी सोच ने हमें बनाया है, इसलिए इस बात का ध्यान रखें कि आप क्या सोचते हैं। शब्द गौण है, विचार जीवित रहते हैं और वे दूर की यात्रा करते हैं। इसका अर्थ ये हुआ कि हम जब हमारे जीवन को जीते हैं और जीवन जीते समय हम जिस विचार पद्धति को, आचार पद्धति को स्वीकृत करते हैं, कहीं ना कहीं अंत तक वे हमारे जीवन को प्रभावित करते रहते हैं। और इसी उद्देश्य से हमारे जीवन के शाश्वत मूल्य कुछ इस तरह से होना चाहिए कि एक व्यक्ति के रूप में, एक सामाजिक सदस्य के रूप में हम उस नियमों को या उस मूल्यों को एक अपनी पीढ़ी, आगे वाली पीढ़ी के लिए देना चाहेंगे। भारत में महान विचारकों और समाज सुधारकों की एक लंबी श्रृंखला दिखाई देती है, जिन्होंने अपने क्रांतिकारी और पथ प्रदर्शक विचारों से भारत ही नहीं पूरे विश्व पर प्रभाव छोड़ा है। उन्होंने शाश्वत विचार विकसित किया है और भारत को सांस्कृतिक एवं नैतिक पहचान प्रदान की है। भारत के नैतिक मूल्यों को विश्व में विशिष्ट स्थान प्रदान करने वाले स्वामी विवेकानंद जी आधुनिक भारत के महान विचारकों में से एक है। और इन्हीं के जो शाश्वत विचार है, उन विचारों को समझते हुए मुझे इस संदर्भ में एक बात जरूर समझ में आई है कि शाश्वत मूल्य का मुख्य आधार है मानवता। मानवता यदि आप अपने जीवन में, यदि आप अपने व्यक्तित्व में, यदि आप अपने कृतित्व में निखारते हैं, तो हमें किसी तरह से अलग से शाश्वत मूल्यों के प्रशिक्षण के लिए या शाश्वत मूल्यों को सीखने के लिए जरूरी नहीं है। तो ये मानवता स्वामी जी को किस तरह से अभिप्रेत थी, शाश्वत मूल्यों में वो किस तरह से ढालना चाहते थे। उन्होंने कहा था, प्राणी मात्र के विषय में कल्याण की भावना को। उनका यह जो विधान था, यह विधान वैश्विक धर्म की संकल्पना को पूरक दिखाई देता है। उन्होंने कहा था, आचार विचार में अहिंसा तत्व का समयोचित पालन हो, सभी के प्रति दया और प्रेम होना चाहिए, समाज के सभी वर्गों में मैत्री और सहकार्य की भावना होनी चाहिए, समाज के प्रति उदारता, सहयोग एवं सहभाग की नीति अपनानी चाहिए, स्वयं के प्रति और दूसरों के प्रति प्रामाणिक होना चाहिए, अपने व्यवहार में निष्कपट वृत्ति क्षमता के अनुसार समाज की सेवा करनी चाहिए, शांतिपूर्ण जीवन के लिए सतत प्रयासरत रहना चाहिए और व्यक्ति ने हर कर्म में उत्साह और हर परिस्थिति में समाधान का भाव रखना चाहिए। और मानवता की इससे सटीक और परिपूर्ण व्याख्या दूसरी को ही नहीं सकती। स्वामी जी के वैश्विक धर्म के संदर्भ में जो विचार अभी हमने सम्माननीय मान्यवर से सुने हैं, उसका जो अर्थ मुझे लगा है, स्वामी जी के अनुसार
एक धर्म से दूसरा धर्म श्रेष्ठ ऐसी तुलना करने की कोई आवश्यकता नहीं है। विश्व के सभी धर्म विश्व के सभी लोगों के लिए है। उसके दिव्यता से विश्व मंच पर अलग अलग स्वरूप में ज्ञान का प्रगटीकरण हुआ है। हम सभी इस दिव्यता के अंश हैं। इस दिव्यता के वरदान पर सबका समान अधिकार है। सभी धर्म प्रेम, करुणा, आनंद इन शाश्वत मूल्यों की ओर ले जाते हुए दिखाई देते हैं। जब हम सभी धर्मों में निहित समानता देख सकेंगे, तब उस धर्म के प्रति आदर निर्माण होने पर ही शांतिमय सह अस्तित्व हो सकेगा। हर समाज की रूढ़ी परंपरा बदलती रहती है, इसलिए धर्म का विचार रूढ़ी परंपरा के आधार पर न होकर शाश्वत जीवन मूल्यों के आधार पर होना चाहिए। यह एक सबसे महत्वपूर्ण तथ्य मुझे स्वामी जी के साहित्य से परिलक्षित होता हुआ दिखाई देता है। स्वामी जी ने राष्ट्र के लिए, मानव कल्याण के लिए अपनी भूमिका स्पष्ट की। वे एक महान देशभक्त, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के उन्नायक व्यक्तिमत्व थे। स्वामी जी कहते थे, यदि व्यक्ति को विकास करना है तो आपको स्वयं के अंदर से बाहर निकलना होगा। कोई आपको सिखा नहीं सकता, कोई आपको आध्यात्मिक बना नहीं सकता। तुम्हारी आत्मा के सिवाय दूसरा गुरु नहीं है। यदि हम हमारी आत्मा को पहचान ले, हम हमारी आत्मा को जान ले, तो सबसे बड़ा गुरु ही वो है, और वही गुरु हमें आगे बढ़ाने के लिए सिद्ध हो सकता है। स्वामी जी के विचार आध्यात्मिकता से ओतप्रोत थे, और यह आध्यात्मिकता भारतीय संस्कृति के परिप्रेक्ष्य में एक सार्वभौमिक रूप लेते दिखाई देती है। जैसे अभी सम्माननीय अतिथि ने कहा था कि उन्होंने सत्य पर बहुत अधिक भर दिया था, और उन्होंने ये कहा था, सत्य को सभी रूप में देखने का प्रयास करें। सत्य का केवल एक ही अंश हम देखेंगे तो वो परिपूर्ण सत्य नहीं होगा। तो इस दृष्टिकोण से भी विवेकानंद जी की जो विचारधारा है वो हमें कहीं ना कहीं भारतीय संस्कृति की समृद्धता से भी रूबरू कराती है, परिचय कराती है। अब स्वामी विवेकानंद जी आज के वर्तमान परिस्थितियों में उनकी प्रासंगिकता क्या है, यदि इस संदर्भ में सोचा जाए तो हमें लगता है कि आज जो वातावरण बना हुआ है पूरे विश्व में और विशेषकर भारत में, उस समय स्वामी जी के विचारों की सर्वाधिक आवश्यकता है। धर्म की परिधि में नैतिक नियमों और व्यवस्था के मूल आधारों, सामाजिक और राजनीतिक व्यवस्थाओं के आधारभूत नियमों, व्यक्तिगत और सामाजिक आचरण की नैतिक अपेक्षाओं और परंपरा और राज्य द्वारा निर्मित विधियों को जीवन मूल्यों में यदि हमें शामिल करना है तो हमें स्वामी जी के विचारों पर चलना ही होगा, उनके विचारों को अपने जीवन में अमल में लाना ही होगा। महर्षि व्यास का इस संदर्भ में एक कथन है कि विश्व में कल्याण की भावना भारतीय जीवन का मूलाधार। स्वामी जी की विचारधारा यही अभिव्यक्त करती है कि मानव कल्याण परोपकार करने से होता है। भारतीय ऋषियों, विचारकों ने गुरुकुल शिक्षण पद्धति में ऐसे उपचारों का, साधनों का आविष्कार किया था जिनका प्रभाव शरीर और मन दोनों पर पड़ता था। इसके प्रभाव से मानव के गुण, कर्म और स्वभाव की दृष्टि उन्नत होती थी। इस आध्यात्मिक उपचार का नाम ही जीवन मूल्य है, जो हमें विवेकानंद द्वारा दिए गए भाषणों के अंशों में, साहित्य में हर स्थल पर दिखाई देता है। ये क्या थे? ये भी शाश्वत मूल्य क्या थे? शायद शब्द अलग हो सकते हैं, लेकिन उसकी जो परिधि है, उसकी जो भाषा है, उसका जो अर्थ है वो एक जैसा है। सबसे महत्वपूर्ण उसका जो परिकल्पना है वह है सहयोग, फिर वात्सल्य, संयम, सत्यनिष्ठा, आदर भाव। मैडम थोड़ा कंक्लूड करा थोड़ा। हो, प्रज्ञा, दृष्टिकोण, सर्जनशीलता और शांति प्रियता। तो इन सभी संकल्पनाओं के माध्यम से हमें विवेकानंद के विचारों को समझना प्रासंगिक होगा। और विवेकानंद के विचारों को समझने के लिए मैं चाहूंगी कि हम जीवन में 5 सिद्धांतों का अमल में लाए। आस्था, आशा, आत्मविश्वास, इच्छा शक्ति और सकारात्मक दृष्टिकोण। यदि इन 5 सिद्धांतों को हम अपने जीवन में लाते हैं तो निश्चित रूप से हम विवेकानंद के विचारों से रूबरू हो सकेंगे। हम उनके पथ पर चलने का एक प्रयास मात्र कर सकेंगे, इतना मैं कहना चाहूंगी। मैं पुनश्च आप सभी के प्रति धन्यवाद देते हुए विदा लेती हूँ। धन्यवाद।
धन्यवाद मैडम, बहुत ही अच्छा। थोड़ा सा टाइम समय का यहाँ पर पाबंदी है, इसलिए थोड़ा सा ये कर दिया। दूसरे पार्टिसिपेंट अपने जो है पेपर रीडर डॉक्टर ज्योति रामोड मैडम पुणे, मैं उनको आवेदन करता हूँ कि वो अपना यहाँ पर पेपर रीडिंग करें। ज्योति रामोड मैडम। ओके, 2 मिनट। ज्योति रामोड मैडम है? हेलो। हाँ हॅलो हॅलो हाँ, बोलिए बोलिए बोलिए। सर्वप्रथम सर्वांना नमस्कार। या आंतरराष्ट्रीय चर्चासत्रात सहभागी झालेले सर्व संशोधक, प्राध्यापक आणि मार्गदर्शक आणि मान्यवर सर्वांना सर्वप्रथम नमस्कार करते। माझ्या संशोधन लेखाचं नाव आहे की स्वामी विवेकानंदांचे प्रेरणादायी विचार आणि त्याला आजची तरुण पिढी, हा माझा विषय आहे। तर सर्वप्रथम प्राचीन काळापासून आपण आजपर्यंत जर इतिहासाची साक्ष पाहिली तर प्राचीन काळापासून ते भविष्याकडे आजपर्यंत आपण हे पाहत आलेलो आहोत की कशा पद्धतीने हे वातावरण बदलत गेलेलं आहे। आणि जसं जसं वातावरण बदलत जातं त्यानुसार व्यक्ती घडत जातो। मैदानात हरलेला माणूस एक वेळ जिंकू शकतो, पण मनाने हरलेला माणूस हा कधीच जिंकू शकत नाही। हे सर्वप्रथम मूलाधार हा जो आहे तो स्वामी विवेकानंदांच्या विचारांचा आहे। मन, मस्तिष्क आणि मनगट हा जर त्रिवेणी संगम योग्य वेळी आणि योग्य प्रकारे जर व्यक्तीच्या जीवनात घडून आला तर त्या व्यक्तीला कोणताही व्यक्ती हा प्रगतीपासून थांबवू शकत नाही। त्यामुळे शिक्षणाचे जर मूळ स्वरूप आपण पाहिले तर ते खूप विस्तृत आहे आणि खूप अनमोल आहे। त्यामध्ये सर्वप्रथम शी म्हणजे शिस्तप्रिय, क्ष म्हणजे क्षमताधिष्ठित आणि न म्हणजे न्यायपूर्ण, या त्रिवेणी संगमातून ज्या शिक्षणाची व्याख्या केली जाते त्या शिक्षणातून स्वामी विवेकानंदांचे प्रेरणादायी विचार जर आजच्या तरुण पिढीने आत्मसात केले तर नक्कीच त्यामध्ये वेगळा आमूलाग्र बदल हा आपल्याला समाजात पाहायला मिळतो। या सृजनशील काळामध्ये परिवर्तनाच्या दृष्टिकोनातून जर पाहिलं तर राजकीय असेल, सामाजिक असेल, भावनिक असेल, मानसिक असेल, धार्मिक, सांस्कृतिक, नैतिक अशा सर्व गोष्टींमध्ये जी परिवर्तने आपल्याला पाहायला मिळतात ती खूप महत्त्वाची आहेत। आणि या परिवर्तनाचा अभ्यास तरुणांच्या दृष्टिकोनातून सूक्ष्म पद्धतीने होणे खूप गरजेचे आहे। आजच्या तरुण पिढीकडे जर आपण पाहिलं तर खूप कमी काळामध्ये यश मिळणे, त्याचबरोबर संघर्षाची कमतरता, आत्मविश्वासाची कमतरता आणि थोडक्यात यश संपादन न झाल्यामुळे ही पिढी आपण नैराश्याकडे गेलेली किंवा वळलेली पाहून येतो। तर या तरुण पिढीने जर स्वामी विवेकानंदांचे विचार आत्मसात केले तर नक्कीच ती यशाची वेगवेगळी शिखरे ही गाठू शकते। आजचा काळ बदललेला आहे, आजची आव्हाने, आजचे प्रश्न हे जरी वेगळे असले तरीही तत्कालीन काळामध्ये स्वामी विवेकानंदांनी जे विचार व्यक्त केलेत तर ते विचार आजच्या समाजासाठी अत्यंत महत्त्वाचे आहेत। आता त्यामध्ये विशेष म्हणजे जी प्रेरणा, जे मार्गदर्शन आपल्याला त्यांच्या विचारातून मिळते, त्यांची जी कुशाग्र बुद्धिमत्ता असेल, अपार कष्ट असेल किंवा त्यांची जी धार्मिकतेबद्दलची संभावना आहे किंवा त्यांची जी संकल्पना आहे तर त्या संकल्पनेची गरज आजच्या समाजाला खूप जास्त प्रमाणात आहे। माझ्या संशोधन लेखाचे जर उद्दिष्ट पाहिले तर स्वामी विवेकानंदांची विचारसरणी आजच्या तरुण पिढीला आत्मसात करून देणे, त्यांच्यामध्ये त्याची जाणीव निर्माण करणे, त्याचबरोबर त्यांच्या विचारातून समाजाला एक विकासात्मक दिशा दाखवणे आणि हिंदू धर्माचा जो वारसा आहे, सांस्कृतिक वारसा जो आजच्या पिढीला मिळाला आहे तो चांगल्या पद्धतीने पुढच्या पिढीला देणे। स्वामी विवेकानंद नेहमी म्हणायचे की नवीन धोरणं आत्मसात केलीच पाहिजेत, नवीन प्रश्नांना सामोरं गेलं पाहिजे, पण त्याला जुन्या संस्काराचा वारसा असणं खूप महत्वाचं आहे। म्हणजे आधुनिकतेला प्राचीनतेचे धागे जोडणारी जी संस्कृती आहे त्या संस्कृतीची ओळख हे स्वामी विवेकानंदांनी करून दिलेली आहे। एक स्वतःची वेगळी ओळख छोटीशी का असत नाही पण ती स्वतःची असावी हे मत स्वामी विवेकानंदाचं असलेलं आपल्याला दिसून येतं। परदेशात जाऊनही स्वतःच्या एक वेगळं अस्तित्व निर्माण हे त्यांनी त्यावेळेस केलेलं आहे। त्यांचे जे ग्रंथ आहेत विशेष रूपाने योग, राजयोग आणि ज्ञानयोग यातूनही त्यांनी एक प्रेरणा आजच्या तरुण पिढीला दिलेली आपल्याला दिसून येते। आध्यात्मिक असेल, धार्मिक असेल किंवा त्या ज्ञानाच्या बळावर आपण समाजात कशा पद्धतीचं परिवर्तन घडवून आणतो हे त्यांनी सांगितलेलं आहे। आपलं जीवन हे फक्त आपल्यासाठीच नाहीये तर ते जीवन आपल्या समाजासाठी आहे, त्यामुळे आपल्या जीवनाचं योग्य नियोजन आपल्याला करता आलं पाहिजे। हा एक मूलभूत संदेश त्यांनी आपल्या प्रत्येक कार्यातून दिलेला आहे। त्यांना वाटत नव्हतं की मी लोक शिक्षणाचं कार्य करेल, पण त्यांच्या गुरूंचा त्यांच्यावर असलेला विश्वास या दृष्टिकोनातून त्यांनी जीवनभर हिंदू धर्माचा प्रसार करण्याचं जे कार्य केलेलं आहे, त्याचबरोबर नवीन पिढीला मार्गदर्शन करण्याचं जे कार्य केलेलं आहे त्याचे महत्त्व अनन्यसाधारण आहे।
ज्या वेळेला वेगवेगळ्या परिषदातून सामाजिक विज्ञान, इतिहास अशा वेगवेगळ्या ठिकाणाहून त्यांनी आपल्या ज्ञानाचं जे लोकांना उपयोग कसा होईल यासाठी त्यांनी जे कार्य केलेलं आहे, तर ते कार्य समजून घेऊन आजच्या तरुण पिढीने आत्मसात केलं तर त्यांचं यश हे मिळणं 100% खरं आहे. आजच्या वर्तमानपत्रे असतील किंवा त्या काळातील वर्तमानपत्रांमध्ये सुद्धा स्वामी विवेकानंदांसाठी जे कार्य किंवा लेख त्यांचे लिहिले जात होते, त्यामध्ये त्यांच्या कार्यपद्धतीचा विशेष आढावा घेतला गेला. त्या पाठीमागची कारण हीच आहेत की स्वतःवरील आत्मविश्वास खूप महत्वाचा आहे जीवनामध्ये. कारण काय होतं की ज्यावेळेला तो आत्मविश्वास तुटतो त्यावेळेला व्यक्ती आयुष्यात कधीच उभा राहू शकत नाही. त्यामुळे तो आत्मविश्वास कायम स्वतःमध्ये असणं, स्थितिप्रज्ञ राहणं प्रत्येक स्थितीला, कारण कुठलीही स्थिती ही कायम नसते, ती स्थिती बदलत जाते. आणि हा जो धागा त्यांनी सांगितलेला आहे तो धागा खूप महत्वाचा आहे. स्वतःचं चारित्र्य कसं घडवलं पाहिजे, ते कुठल्या अंगाने घडवलं पाहिजे, समाजासाठी काय काम केलं पाहिजे. केवळ देवाचं नामस्मरण करणं, 24 तास देवाचं नाव घेणं म्हणजे देशसेवा नव्हे, तर देशसेवा म्हणजे समाजासाठी स्वतःला वाहून घेणं म्हणजे खरी देशसेवा होय किंवा मानवतेची सेवा होय असं म्हणत. प्रत्येक कार्यातून त्यांनी विश्व कल्याण असेल, त्याच्यानंतर विश्व समावेशकता असेल किंवा विश्वासाठी स्वतः आपण काय केलं पाहिजे हे त्यांनी आपल्या कार्यातून दाखवून दिलेलं आहे. कर्मठता असेल, ज्ञान, सेवा, बुद्धिमत्ता, मनन, चिंतन या दृष्टिकोनातून व्यक्ती कसा स्वतःवर विजय मिळवू शकतो आणि त्या विजयातून समाजाला एक वेगळी दिशा कशी देऊ शकतो, समाज सृजनशील मार्गाने कसा घडवू शकतो याचा आदर्श उदाहरण म्हणून स्वामी विवेकानंद यांच्याकडे आपण पाहतो. पाश्चिमात्य जगामध्ये त्यांनी भारताचे आध्यात्मिक सांस्कृतिक क्षेत्रातील दूत म्हणून जी भूमिका निभावलेली आहे ती भूमिका अत्यंत उल्लेखनीय आहे. आजच्या सद्यस्थितीमध्ये शाळेपासून ते महाविद्यालयीन तरुणांपर्यंत स्वामी विवेकानंदांच्या विचारांची गरज ही खूप मोठ्या पद्धतीने असलेली आपल्याला दिसून येते. म्हणजेच जी प्राचीनता आहे, ज्या प्राचीनतेतील जी संस्कृती आहे ती संस्कृती आजच्या काळातही कशा पद्धतीने टिकवून ठेवता येईल आणि तो वारसा पुढच्या पिढीला आपण कशा पद्धतीने देता येईल याचा एक अत्यंत संघर्षमय जीवनाचा एक विद्यार्थ्यांना आदर्श म्हणून स्वामी विवेकानंद यांच्याकडे आपल्याला पाहता येईल. वेगवेगळे मार्मिक संदेश त्यांनी आपल्या वेगवेगळ्या सभा यातून समाजाला दिलेले दिसून येतात. आता त्याबद्दल त्यांचं एक महत्वाचं वाक्य खूप होतं की धन आणि ज्ञान याच्यामध्ये जर तुम्ही कंपॅरिझन केलं तर तुम्हाला धनाची रक्षा करावी लागेल अशी वेळ येते, पण एक ज्ञान असं आहे जे तुमची रक्षा करेल कुठल्याही परिस्थितीमध्ये. त्यामुळे धनापेक्षा ज्ञानाला खूप महत्व द्या हे त्यांनी आपल्या कार्यातून सांगितलेलं दिसून येतं. ज्या वेळेला आपण या गोष्टी विचार करतो किंवा या सगळ्या गोष्टींचा आढावा आजच्या तरुण पिढीला करून देणे, त्यांच्या विचारांची जाणीव करून देणे आणि आजच्या तरुण पिढीतलं जे अज्ञान, असं वाटतं की समाज प्रगतीकडे चाललाय पण तो खरंच तिकडे जातोय का, तर ही जी प्रासंगिकता आहे तर ती जर स्वामी विवेकानंदांच्या विचारांना जर आपण आत्मसात केल्यावर लक्षात येईल की खरंच त्या दृष्टिकोनातून आपल्या समाजाची, आपल्या तरुण पिढीची किंवा आपल्या येणाऱ्या पिढीची खरंच त्या दृष्टिकोनातून प्रगती होतीये का. त्यामुळे आजचे जागरूक प्राध्यापक म्हणून किंवा आपण मार्गदर्शक म्हणून आपली खूप मोठी जबाबदारी ही आहे की आपण त्या दृष्टिकोनातून वाटचाल केली पाहिजे आणि हाच उद्देश ठेवून मी हा संशोधन लेख लिहिलेला आहे. मला मार्गदर्शकांनी आणि त्याचबरोबर समन्वयकांनी इथे पेपर प्रेझेंट करण्याची संधी दिली त्याबद्दल मी आपल्या सर्वांचे आभार मानते. धन्यवाद सर. धन्यवाद मैडम। उसके बाद डॉक्टर सुषमा देशपांडे मैडम, औरंगाबाद 9 छत्रपति संभाजीनगर। सुषमा देशपांडे मैडम। आदरणीय व्यासपीठ, माझा आवाज येतोय का? हाँ मैडम, आवाज येतोय, व्यवस्थित आहे, आपण करा, चालू करा। आदरणीय व्यासपीठ, व्यासपीठावर उपस्थित सर्व मान्यवर आणि या सत्राचे अध्यक्ष डॉक्टर सतीश कदम सर, महात्मा फुले महाविद्यालय अहमदपूर आयोजित स्वामी विवेकानंद यांचे भारत व जगासाठी योगदान या विषयावरील एकदिवसीय आंतरविद्याशाखीय आंतरराष्ट्रीय परिषदेत मी प्राध्यापक डॉक्टर सुषमा देशपांडे स्वामी विवेकानंदांचे प्रेरणादायी विचार व शिकवण या विषयावरील माझ्या शोधन निबंध या ठिकाणी मी प्रेझेंट करू इच्छिते। वास्तविक पाहता स्वामी विवेकानंदांचे विचार हे 5 किंवा 10 मिनिटात न संपणारा विषय आहे, पण वेळेची मर्यादा लक्षात घेता मी फक्त या ठिकाणी जिस्ट सांगेन। असं म्हटलं जातं की द हिस्ट्री ऑफ अ कंट्री इज द हिस्ट्री ऑफ इट्स ग्रेट मॅन। एखाद्या देशाचा इतिहास त्या देशातील थोर पुरुषांचा इतिहास असतो
भारताला अशा अनेक थोर पुरुषांचा, विचारांचा आणि मतांचा वारसा लाभलेला आहे. त्यातीलच एक रत्न म्हणजे स्वामी विवेकानंद. स्वामी विवेकानंदांनी धर्मात, समाजात आणि राष्ट्रात समष्टी मुक्तीच्या महान आदर्शाची स्थापना केली. विवेकानंदांचे विचार हे मानवी संस्कृतीच्या प्रगतीच्या क्रमाला अनुसरून विकसित झाले होते. असे म्हटले जाते की लोकोत्तर चारित्र्याच्या महान पुरुषांच्या पावन जीवन कथांचे अनुशीलन केल्यास आपले निश्चित कल्याण होते. या वचनाला स्मरून मी विवेकानंदांचे स्त्री आणि तरुणांविषयीचे विचार या ठिकाणी प्रेझेंट करू इच्छिते. भारतीय तरुणांना उपदेश करताना त्यांनी म्हटलं होतं की आपल्या भारतीय सत्याचा भारतात आणि भारताबाहेर प्रचार करण्याकरता मला तरुण प्रचारकांना शिक्षण देणाऱ्या संस्था आपल्या देशात सुरू करायच्या आहेत आणि यासाठी सशक्त तरुण आणि उत्साही तरुण मला हवे आहेत. असे 100 तरुण जरी मला मिळाले तरी मी क्रांती घडून आणेल, एवढा त्यांच्या तरुणांच्या शक्तीवर विश्वास होता. त्यानंतर भारतीय तरुणांना उद्देश करताना ते पुढे म्हणतात की भारतीय तरुण आणि पाश्चात्य राष्ट्रातील लोक यांच्यात प्रमुख फरक असा की पाश्चात्य राष्ट्रांमधील लोकांमध्ये पराकोटीचा आत्मविश्वास आहे आणि भारतीय तरुणांमध्ये तो नाही. तो आत्मविश्वास भारतीय तरुणांनी प्राप्त करावा आणि यासाठी प्रथम भारतीय तरुणांनी आपले मज्जातंतू शक्ती संपन्न करावे असा उपदेश त्यांनी भारतीय तरुणांना दिला. देशभक्तीच्या 3 पायऱ्या त्यांनी भारतीय तरुणांना सांगितल्या होत्या. देशभक्तीची भावना प्रत्येक तरुणांमध्ये असायला हवी. देशभक्तीसाठी प्रामुख्याने हृदयाची तळमळ, बुद्धी आणि तर्क पुढे घेऊन जातो आणि म्हणून देशभक्तांच्या ठिकाणी हृदयाची तळमळ. देशातील भूक, दारिद्र्य, गरिबी, अज्ञान बघून जर तरुणांचे हृदय पिळवटून निघत असेल आणि देशाच्या दुर्दशेच्या चिंतेने तुम्हाला जर ग्रासले असेल आणि तुम्हाला तुमचे घरदार, मुलं, बाळ, पत्नी यांचा विसर या सर्वांमध्ये जर पडला असेल तर तुम्ही देशभक्त होण्याची पहिली पायरी पार केली आहे. देशभक्तीची दुसरी पायरी त्यांनी सांगितली होती की फक्त देशाच्या दुर्दशेविषयी न बोलता त्या दुर्दशा थांबविण्यासाठी तुम्ही कोणता मार्ग शोधला आणि तुम्ही देशभक्तांना मदत करता का आपल्या देश. शायद कैसा है, बीच में अगर फोन आ जाता है तो डिस्कनेक्ट होता है शायद. देशपांडे मैडम, प्लीज अनम्यूट yourself. Unmute yourself, ma'am. Unmute करा मॅडम. देशपांडे मॅडम, तुमचा आवाज येत नाही. हॅलो, आता येतोय का सर? येस येस. हो मॅडम, हो. देशभक्तीची तिसरी पायरी त्यांनी सांगितली होती की या सर्व कार्यात विघ्ने जरी आली तरी त्या सर्व विघ्नांना तोंड देण्यासाठीचा दृढनिश्चय तुमच्या ठिकाणी आहे काय आणि या देशकार्याच्या मार्गात किती जरी अडथळे आले तरी सत्य आहे तेच करील, सत्य ते करण्याची ताकद तुमच्या ठिकाणी आहे का? ते जर असेल तर देशभक्तीची तिसरी पायरी सुद्धा तुम्ही पार केली. अशा प्रकारे 3 पायऱ्यांच्या माध्यमातून देशभक्त होण्यासाठीचा उपदेश त्यांनी भारतीय तरुणांना केल्याचे दिसून येते. यानंतर मी स्वामी विवेकानंदांच्या स्त्री विषयक विचारांकडे वळेल. स्वामी विवेकानंदांनी आपल्या लेखनातून आणि व्याख्यानातून भारतीय स्त्री आदर्श कशी आहे याचं विवेचन केलं आहे. भारतीय स्त्रीचं समाजातील स्थान, कुटुंबातील स्थान, तिची ध्येय आणि उद्दिष्ट हे त्यांनी सांगितले होते. भारतीय स्त्री समोर अनेक समस्या आहे आणि त्या निराकरणाचे मार्ग, तसेच भारतीय स्त्रियांचे जीवन सर्वार्थाने उन्नत बनविणे आणि भारतीय स्त्रीला पुरुषांच्या बरोबरीने सक्षम बनविणे हे आपले कर्तव्य आहे असे त्यांनी सांगितले होते. भारतीय स्त्री
कारण ज्या देशातील स्त्री ही सुशिक्षित असते, ज्या देशात स्त्रियांना सन्मान मिळतो आणि ज्या देशात स्त्रियांच्या विकासाला अनुकूल वातावरण निर्माण करण्यात येते, तोच देश उन्नत अवस्थेत पोहोचतो असे ते. भारतीय संस्कृतीच्या स्त्रियांकडून फार अपेक्षा आहेत. पाश्चात्य राष्ट्रात फक्त स्त्री सौंदर्याची पूजा केली जाते, पण भारतीय संस्कृतीत स्त्रीचा आदर्श ही सीता, सावित्री, दमयंती आहे. म्हणजेच भारताने केवळ स्त्रीच्या सौंदर्याची पूजा केली नाही, तर रामकृष्ण परमहंस किंवा स्वामी विवेकानंदांनी स्त्रीला नेहमीच आनंददायी जगदंबेच्या ठाई कल्पून आदिमाता समजून तिच्या कर्तृत्वालाही तेवढेच महत्व दिले आहे. म्हणजे स्त्री सौंदर्याबरोबर स्वामी विवेकानंदांच्या मते स्त्री कर्तृत्वालाही तेवढेच अधिष्ठान असल्याचं दिसून येतं. भारतीय स्त्रीच्या मातृत्व संकल्पनेबद्दल सुद्धा त्यांनी अनेकदा गौरवोद्गार काढलेले आहे. प्रेम भावनेचा आदर्श म्हणजे आई व क्षमा हाच तिचा धर्म असं त्यांनी मातृत्वाबद्दल सांगितलं होतं. अभद्र शापवाणी कधीच आईच्या तोंडून निघणार नाही. प्रत्यक्ष परमेश्वराला देखील भारतीय लोक माऊली म्हणून आळवतात. या मर्त्य जगात भगवंताच्या प्रेमाची सर्वात अधिक जवळची साक्ष आईमध्येच आम्हाला पाहायला मिळते. म्हणूनच रामप्रसादादी जगन्मातेचे उपासक आपल्या काव्यात म्हणतात की कुपुत्रो जायते भवचिदापि कुमाता न भवती. म्हणजे कुपुत्र जन्माला येऊ शकेल, पण कुमाता कधीही असू शकणार नाही. स्त्री जीवनाचे अंतिम लक्ष म्हणजे मातृत्वाचा लाभ होय असे हिंदूंना वाटते. कारण भारतात सुपुत्र लाभावा म्हणून पुत्रप्राप्तीसाठी नवस किंवा व्रतवैकल्ये केले जातात. ज्याच्या जन्मासाठी व्रतवैकल्ये केली जातात तो आर्य, अशी आर्य शब्दाची एक व्याख्या त्यांच्या लिखाणातून आलेली आहे. भारतीय समाजात स्त्रीचे स्थान कशा प्रकारचे आहे ते आपण पाहू. भारतीय समाजात सर्वोच्च स्थानी माता, नंतर पत्नी आणि नंतर कन्या असा क्रम आहे. भारतात जनकापेक्षा जननीला श्रेष्ठ मानतात. शक्ती माता, सर्व शक्ती संपन्नता, ईश्वरी शक्तीची भावना या सर्व गोष्टी माता या शब्दात समाविष्ट झालेल्या आहेत. भारतीय समाजात स्त्रियांबद्दलची जी आदराची आणि श्रद्धेची भावना आहे तिला या जगात कुठेही तोड नाही. जगातील प्रत्येक समाजात स्त्री पूजन आहे. स्त्री पूजन नाही तो समाज कधीही मोठा होऊ शकत नाही. केवळ स्त्री पूजनाने अनेक समाज आज थोर झालेले आहेत. भारतीय समाजात स्त्रियांमध्ये चारित्र्य, सेवाभाव, स्नेह, दया, संतुष्ट वृत्ती आणि भक्ती हे गुण पाहावयास मिळतात. ते संपूर्ण जगात कुठेही पाहायला मिळणार नाही. पण या भारतीय स्त्रियांचा विकास होणे गरजेचे आहे. त्यासाठी त्यांना शिक्षण देणे आणि ते शिक्षण आधुनिक विज्ञान किंवा तंत्रज्ञानाचे असावे असाही विचार त्यांनी त्या काळी मांडला होता. भारतीय स्त्रियांपुढे अनेक समस्या आहेत आणि या समस्यांचं निराकरण हे मोठ्या संख्येने स्त्रियांना शिक्षण दिल्याने सुटणार आहे. अशा प्रकारे स्वामी विवेकानंदांचे विचार हे समस्त भारतीय तरुणांना आणि स्त्रियांना कायम मार्गदर्शक ठरणार आहे. स्वामी विवेकानंदांनी समाजसेवा, समाजोद्धार, अध्यात्म, देशभक्ती, अद्वैत तत्वज्ञानाचे नवे रूप, व्यावहारिक वेदांत ही भारतीय तत्वज्ञानाला दिलेली बहुमोल देणगी आहे. याचबरोबर स्वामी विवेकानंदांनी भारतीय तरुणांना आणि स्त्रियांना त्यांच्या प्रश्नाचे चिंतन करून जो उपदेश केला तो अनादी काळापर्यंत स्त्री आणि तरुण वर्गाला निश्चितच उपयोगी ठरेल यात शंका नाही. या ठिकाणी माझा जो शोधनिबंध आहे त्या शोधनिबंधाचा काही भाग मला सादर करण्याची अध्यक्षांनी आणि संयोजकांनी संधी दिली त्याबद्दल मी धन्यवाद. धन्यवाद मैडम. आपने तीनों यहाँ के रिसर्च जिन्होंने पढ़ा है वो कविता तातेड़ मैडम, वो जहाँ की यवतमाल से है, ज्योति रामोड मैडम जो कि पूना से है, और अभी जिन्होंने सुषमा देशपांडे मैडम जो छत्रपति संभाजीनगर से है. बहुत ही अच्छा. मैं तो जो आयोजकों को
यह कहना चाहूंगा कि अगर ये दिन भर चले जी तो बहुत ही अच्छा था, हर एक का रिकॉर्डिंग होना चाहिए था, क्योंकि सबसे ज्यादा मैं तो इसे मिडिवल में सेन पाठक सर, मैं आपको बिल्कुल बारकाई से देख रहा हूं कि आप वहां से यहाँ पर जो टेक्सास से, मुझे बहुत अच्छा लगा। और इस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जो हमने ये 2-4 दिन में जितना भी समय मिला स्वामी जी का अध्ययन किया, वही सफलता इसमें सबसे ज्यादा है। मेरे पास तो ये पूरे मतलब जितने भी है वो मेरे पास है ये, तो ये पढ़ना जरूरी है, क्योंकि अभी जमाना बदल गया है। जो मैं देख रहा हूं स्वामी जी का जितना अध्ययन मैंने किया, अभी राजनीति में जो भी चल रहा है उनके पीछे अगर स्वामी जी का अध्ययन या स्वामी जी का अगर अध्ययन लोग करते हैं, पॉलिटिशियन हो या कोई भी हो, तो ये हिंदुस्तान या दुनिया अलग से चल सकती है। आपने, मैं शुरू से देख रहा था सेन पाठक सर आप तो है, आपके यहाँ के आचार्य जो वसंत बिरादर सर है वो भी यहाँ पर है, और मरियंका कुछ मैडम है वो भी शुरू से है। तो मैं पहले देख रहा था कि शुरू में अपना यहाँ का स्कोर 91 तक गया था, अभी मेरे ख्याल से 74 लोग हैं, और उसमें से 2 बाहर के यूनिवर्सिटी के हैं, नहीं तो मराठी ज्यादा है, लेकिन पाठक साहब डटे हुए हैं। तो 2-3 बातें यहाँ पर मैं अपने यहाँ पर रखना चाहता हूं। पहली बात है कि मैं जो जितना उनके बारे में पढ़ाई किया हूं, जितने उनके बारे में ये किया हूं, तो पहला यह है कि मैं खुद को बहुत ही ये समझता हूं कि मैं उनके जो आश्रम है वहां पर 2-2 दिन 3-3 दिन वहां पर रह चुका हूं। जैसे कि कोलकाता हो या कन्याकुमारी, वहां पर मैंने अनुभव किया कि उनमें कुछ है, अलग सी कुछ बातें हैं, जहां पर जाने के बाद मन में कुछ अलग तरंग उठते हैं। उसी बात से मैं आगे बढ़ता हूं कि 1893 में जब उन्होंने शिकागो में जो विश्व धर्म परिषद को संबोधित किया था, मेरी जानकारी के हिसाब से उनको पहले बोलने की अनुमति नहीं थी। उसके बाद एक प्रोफेसर ने उनको ये करके उनको अनुमति दे दी, और आश्चर्य की बात यह है कि उनको खाली 10 मिनट का समय मिला था। 10 मिनट में अब भी ये पूरे वर्ल्ड के कान में एक ही आवाज गूंजती है, मेरे भाई और बहनों, ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। तो वो जो आवाज है पाठक सर, मुझे लगता है कि अगर वो 10 मिनट के बजाय अगर 1 घंटा मिल जाता तो क्या हो जाता विश्व में, वो है। तो उसी में उन्होंने जो बात कही है, वो 2-3 बात यहां पर मैं रखना चाहता हूं कि उन्होंने सबसे पहले सबको बताया कि मैं उस दुनिया से हूं, उस राष्ट्र से हूं, उस संस्कृति से हूं जो सबसे सनातन है, सबसे बहुत ही पुरानी संस्कृति है। वो बात अलग है। तो ये बात रखते हुए जब भी मेरा जो यहाँ पर रिसर्च पेपर रखता हूं या मैं कुछ जहां पर स्पीच देता हूं, थोड़ा सा अलग कहने की बात कर देता हूं। तो उन्होंने और एक मुद्दा वहां पर रखा था, मैं उस देश का हूं या उस संस्कृति का हूं, उस मिट्टी का हूं जो संस्कृति हर एक को अपने गोद में समा लेती है। मुझे उस बात से याद आया कि यहाँ पर जो अलग बात यहाँ पर रखने वाला हूं मैं, जो कि बहुत कम लोगों को ये मालूम होगी कि हम तो यहाँ पर बाहर देश से या 1000 साल पहले यहाँ पर मुस्लिम आ गए, वो भी हमारे भाई यहाँ पर अभी घुल मिल गए, लेकिन उससे भी बहुत पहले 2000 साल पहले यहाँ पर एक अलग बात है जो अपने सामने रखता हूं। तो अलग बात यह है कि 2000 साल पहले कुछ फारसी लोग गए या जू लोग गए, बाहर से यहाँ पर इंडिया में आ गए, हिंदुस्तान में आ गए, और आते आते उनका जो जहाज था वो जहाज को एक्सीडेंट हो गया, और उसमें से खाली 14 लोग वहां पर बच गए। महाराष्ट्र में अलीबाग बोल के डिस्ट्रिक्ट है, वहां पर एक नौगांव उसका गांव का नाम है, वहां पर वो 14 लोग उतर गए, और जो जितने भी उनको शव मिले, ये 14 लोगों ने उनको वहां पर दफनाया, और उसी को अभी जू दफन भूमि बोलते हैं। मतलब 2000 साल पहले यहाँ की अलग सी स्मशान भूमि थी, ये जू लोगों की ये अलग बात है हिंदुस्तान में। और ये बात वैसे तो 2000 साल पहले
वहां पर इतना ये नहीं था। बाद में वो उनकी भी कौम बढ़ती गई और उसके बाद ये हो गया कि लोगों को लगा कि भाई ये जो लोग हैं यहाँ पर हिंदुस्तान में रहते हैं। हिंदुस्तान में तो 2000 साल पहले एक ही संस्कृति, बाद में मुस्लिम आ गए, एक अलग संस्कृति आ गई, धर्म आ गया। लेकिन ये जो 2000 साल पहले उस कुछ गांव में लोग रहते हैं, उनकी संस्कृति अलग है, उनकी भाषा अलग है। हाँ, हालांकि वो लोग अपने में हिंदू संस्कृति में मिलजुल करके वो भजन गाते हैं, सब कुछ गाते हैं, लेकिन उनका भगवान का जो है वो अलग है, उनकी कुछ खान पान अलग है। और जब उनको बताया कि आप लोग कौन है, तो उनके लिए एक मराठी में अलग वर्ड है, उनको बेने इज़राइल कहते हैं। बेने इज़राइल, महाराष्ट्र में नया वर्ड होगा बेने इज़राइल। तो ये बेने इज़राइल क्या बात है? तो बेने इज़राइल बोले तो बेने का मतलब रहता है हिब्रू भाषा में, मतलब वो उनकी हिब्रू भाषा है, बेने का मतलब है बेटा। तो उन्होंने कहा कि मैं इज़राइल का बेटा हूं। ये 2000 साल की, मतलब अभी जो बात वहां पर कर रहे थे, इज़राइल वैसे तो उस टाइम में नहीं था, लेकिन जो उन्होंने बताया कि मैं बेने इज़राइल हूं, मतलब जहां इज़राइल का ये हो गया, फाउंडेशन हो गया, उसके बाद उनको लगा कि जू जहां जहां पूरे हिंदुस्तान में हो या पूरे वर्ल्ड में हो, जू का एक अलग जो राष्ट्र है वो है इज़राइल। जब इज़राइल का वहां पर फाउंडेशन हो गया, इज़राइल की निर्मित हो गई, तो उसके बाद उन्होंने सबको आह्वान किया कि भाई इज़राइल सब लोग आ जाए। तो जहां दुनिया भर के लोग वहां पर चले गए, और हिंदुस्तान की जब बारी आ गई तो हिंदुस्तान से भी करीब करीब 50,000 लोग वहां पर चले गए। तो वो इज़राइल के वहां पर चले जाने के बाद इज़राइल में यह हो गया कि इज़राइल में अभी भी, आपको ये जानकर ताज्जुब होगा कि इज़राइल में अभी भी मराठी वहां पर स्कूल है। तो उसका मतलब यह है कि यहाँ पर जो अपनी जो संस्कृति है, या हिंदू की संस्कृति है, या यहाँ की सनातन संस्कृति है, वो इतनी प्राचीन है, सबको अपने गोद में समा लेती है। वही उन्होंने अपने जो यहाँ की शिकागो की ये जो हुआ था, उन्होंने ये बता दिया था। तो जो उन्होंने और एक बात कही थी कि भाई अलग अलग ये जो नदियां है, अलग अलग नदियां है, ये सब नदियां जाकर के सागर में मिल जाती है। तो वैसे ही हर आदमी या हर धर्म अपना अपना जो धर्म का सम्मान करता है या कुछ करता है, आखिर उसकी आखिरी इच्छा क्या है? तो अपने भगवान के पास जाना है। हर एक का नाम अलग है, लेकिन उसको उसके पास जाना है। इस हिसाब से अगर अभी जो चल रहा है, खासकर इंडिया में चल रहा है, एक धर्म दूसरे धर्म के ऊपर जो कमेंट करता है, तो स्वामी जी ने उस टाइम में एक बात बहुत ही अच्छी कही है, अगर एक आदमी दूसरे धर्म के बारे में कुछ कहता है तो वो ऐसा होना चाहिए कि ऐसा है कि अपने धर्म की वो बदनामी कर रहा है। तो स्वामी जी के विचार देखो 1893 में उन्होंने ये रखा था, ये भी बात बहुत ही अलग है। तो स्वामी जी का जो मेन बेस था, मुझे एक अच्छा लगा, हिंदुस्तान में अभी सनातन संस्कृति को या हिंदू धर्म को बहुत ही टारगेट किया जाता है। खासकर अपने ही लोग ज्यादा है, जिनको ज्यादा जानकारी नहीं होती, जो अभी अलग किस्म को खुद को कहते हैं कि भाई मैं थोड़ा सा फॉरवर्ड हूं, तो वो लोग अपने बारे में जानकारी न रखते हुए उनके ऊपर कमेंट कर देते हैं। उनके लिए ये स्वामी जी का विचार जो है, स्वामी जी का विचार बहुत ही अलग है। उन्होंने किसी धर्म के बारे में ना कुछ कहा है या टिप्पणी की है। अपना खुद को, आत्मा को पहचानो, आत्मा के अंदर जाओ और खुद बाद में दुनिया को देखो। अगर ऐसा हो जाए तो फिर बहुत ही उनके बारे में अलग हो सकता है। क्योंकि मैं पहले बोल दिया था आपको कि भाई बेने इज़राइल की बात अलग है। वैसे तो ये हिंदुस्तान का अगर अपन प्राचीन इतिहास पढ़े, एंशिएंट हिस्ट्री पढ़े, तो अपन देख सकते हैं कि अफगानिस्तान तक अपने जो सीमा थी, हिंदुस्तान की सीमा वहां तक सटीक थी। तो इसलिए अफगानिस्तान का अगर मैं थोड़ा सा अर्थमेटिकल देख रहा था, तो 1947 में अफगानिस्तान में करीब करीब 5 लाख हिंदू थे। 1947 में जाटों की संख्या वहां पर अलग थी। तो ये लोग कहां गए, ये भी सोचने वाली बात है। दूसरी बात है कि दुनिया की सबसे बड़ी मूर्ति, बौद्ध मूर्ति, वो अफगानिस्तान में थी, काबुल में, वो वहां पर ये हो गया। वैसे हिंदू ने किसी का मंदिर तोड़ा, किसी का धर्म का कुछ ये तोड़ा, ऐसा दुनिया में कहीं नहीं दिखता है। ये स्वामी जी की जो सीख है वो भी यहां पर मैं कोट करना चाहता हूं। दूसरा बात है कि लाहौर, जो लाहौर का नाम तो बोले तो आप लाहौर का, कि लाहौर जो सिटी है वो इनको मंदिरों का शहर कहा जाता है। और मैंने कल ही थोड़ा सा पेपर में पढ़ा था कि 1938 में
आर्य समाज या अपना यहाँ के जो पेपर निकलते थे आर्य समाज के वगैरह, तो वहां 1938 तक वहां से ऐसे सनातन धर्म के न्यूज़पेपर भी निकलते थे। मतलब ये दुनिया कहाँ चलेगी, ये दुनिया अपन क्या करे। तो ये स्वामी जी के बारे में वहां पर एक बहुत ही अच्छी कहने वाली बात है, ये भी मुझे कहते हुए गर्व आता है। तो इस बात से अगर स्वामी जी के विचारों से अगर दखल अंदाज किया जाता है, तो आदमी में एक दूसरे के धर्म के ऊपर अपन लांछन लगाते हैं, एक दूसरे के ऊपर अपन ये कर देते हैं। तो इसलिए उन्होंने एक बात बहुत ही अच्छी कही है। तो उन्होंने कहा है कि एक आदमी अगर अपने धर्म से दूर हो जाता है, तो समझ लो अपने धर्म की एक जो संख्या है वो घट गई, ऐसी नहीं है। तो एक धर्म का दुश्मन अपना बढ़ गया, वो बात अपने हमेशा याद रखना चाहिए। एक अगर आदमी अपने धर्म से भी चला गया, तो वो एक संख्या नहीं कम होगी, एक क्वांटिटी नहीं कम हो गई, तो अपना एक शत्रु बढ़ गया या दुश्मन बढ़ गया। उसी हिसाब से हर जो भी धर्म हो, उन्होंने उस बारे में सोचना चाहिए। तो ये कहते हुए आप जो धर्म की बात चल रही है हिंदुस्तान में, मेरे ख्याल से अमेरिका में भी अभी प्रॉब्लम शुरू हो गई है। अमेरिका में प्रॉब्लम है, फ्रांस में तो बहुत ही प्रॉब्लम है, या लंदन में भी बहुत प्रॉब्लम आ रही है, इंग्लैंड में भी प्रॉब्लम आ रही है, यूके में प्रॉब्लम आ रही है। तो ये अभी सोचने वाली बात है। और ये सोचते सोचते मुझे अभी करंट टिप्पणी करना यहाँ पर करना है। जो यहाँ के आयोजक है उन्होंने कितना अच्छा चयन किया कि तीनों जो लेडीज थी उनको ही यहाँ पर पेपर प्रेजेंट का मौका दिया, जो स्वामी जी के विचारों के ऊपर चलते हैं। स्वामी जी ने कहा है पशु और मनुष्य इसमें अंतर क्या है, तो वो कहते हैं कि पशु जो है हमेशा नीचे देखकर चलता है और हमेशा मानव प्राणी जो है ऊपर देख के चलता है, आगे की सोच रखता है। इसलिए उन्होंने फर्क है। और इसलिए अभी मतलब ये मेरे ख्याल से कि मैं ये पढ़ रहा था थोड़ा सा न्यूज, तो हमारे डिस्ट्रिक्ट में यहाँ पर बहुत बुरी घटना एक बच्चे के साथ घट गई। तो ऐसे आदमियों को अगर ये स्वामी जी के विचार अगर उनके दिल में गए, तो ये इस विचार से वो वहां पर दूर जा सकते हैं। और दूसरे भी मैं सेन पाठक सर से यहाँ पर निवेदन करता हूं, मैंने पढ़ा है कि अमेरिकन को जो रेवोल्यूशन हुआ था, तो उसी में गीता का कुछ ये मिला है उनको, कि गीता पढ़ करके उन्होंने जो थोड़ा सा मोटिवेशन मिला और अमेरिकन राज्य क्रांति या रेवोल्यूशन हो गया, वो भी ये बात पढ़ी थी। तो ये भी अपना जो दोनों का रिश्ता है वो भी यहाँ पर मिल जाता है। और जाते जाते एक बात कहता हूं कि जो आपने शुरू में कही थी कि कॉन्फिडेंस आदमी में होना चाहिए। अगर कॉन्फिडेंस आपके अंदर अगर स्वत्व है, अपने अंदर स्वत्व है, तो उसके अंदर कॉन्फिडेंस है। उसके लिए योगा होना जरूरी है, उसके लिए आपका खुद का जो ये है आचार विचार ये होना जरूरी है। इसलिए एक उन्होंने एक एग्जाम्पल दिया था, वो एग्जाम्पल कहकर मैं अपने बात को विराम देना चाहूंगा। तो उन्होंने कहा था कि एक बकरी है और एक बाघ है। बकरी चल रही थी और उसी टाइम एक जो बाघिन थी उन्होंने उसके ऊपर हमला कर दिया, और हमला करते टाइम ही जो उन्होंने जंप लगाई, उसी टाइम वो बाघिन ने एक बच्चे को जन्म दिया, बछड़े को जन्म दिया। बछड़ा तो गया, बाघिन मर गई, और जो भेड़ है भेड़ बच गई। लेकिन उसके बाद वो बछड़ा था, वो बछड़े को उस बकरी ने या उसको भेड़ ने उसको दूध पिलाया। थोड़ा सा वो बच्चा बाघ का बछड़ा बड़ा हो गया, और बड़ा होने के बाद उसको तो लग रहा है उसके साथ वो भी इधर उधर घूम रहा है, वो दूध पीता है उस भेड़ का। और दूध पीते पीते एक दिन वो जो भेड़ थी वो अलग जगह चली गई। उसके बाद दूसरा एक जो वहां पर बाघ आ गया, और बाघ ने उसको देखा, बच्चों को देखा। बड़े बाघ को तो पहचान गया कि भाई ये तो अपने बिरादरी का आदमी है, ये अपने बिरादरी का है। उसको लेकर के वो जब तालाब में गया, और तालाब में जाने के बाद जो छोटा बछड़ा था उसने पानी पिलाना शुरू कर दिया, पानी पीना शुरू कर दिया। उसने अपनी तस्वीर देखी, और तस्वीर देखने के बाद उसको लगा यार मैं तो भेड़ जैसे नहीं हूं, ये तो बाघ जैसा लगता हूं। और उसके अंदर कॉन्फिडेंस आ गया, और कॉन्फिडेंस के बाद ही उसने जो अपना आवाज निकाला, हमारे मराठी में उसको डरका ही बोलेंगे, आवाज निकाला। तो ये होता है स्वत्व, अपने को पहचानना, और ये स्वामी जी ने अपने को सिखाया। तो ऐसे बहुत सी बातें हैं। जाते जाते ये हिंदू संस्कृति को खासकर अमेरिका में, उस टाइम में अमेरिका में भी अपने हिंदू धर्म के बारे में कुछ बातें कही जाती थी कि ये हिंदुस्तान ऐसा है। जैसे कि आपने 1947 में
आपने देखा होगा कि जो इंग्लैंड वाले लोग थे वो भी बोलते थे कि ये सपेरों का देश है। तो वैसे अमेरिका में उनको एक पता चला कि क्योंकि उन्होंने बता दिया है, कुछ लोगों ने उनके सामने एक बात रखी थी कि यहां पर औरत को जिंदा जलाया जाता है, जो पति मरने के बाद वो ऊपर खुद चली जाती है तो उसको सती प्रथा मराठी में कहते हैं, तो उन्होंने जलाया जाता है। तो उसका भी खंडन बहुत अच्छी तरीके से, मुझे स्वामी जी इसलिए बहुत अच्छे लगते हैं कि स्वामी जी किसी के ऊपर अपना जो विचार है वो प्रेशर नहीं करते हैं, वो उनको मोल्डेड करते हैं कि भाई अपने को पहचानो। तो वो बात करते हुए उन्होंने कहा था कि भाई यहां पर तो अमेरिका में उस टाइम में जो मैजिक करते हैं ऐसे औरतों को जिंदा जलाया जाता है, उसको टॉर्चर करते हैं और उनको जिंदा जलाया जाता है, जबरदस्ती जलाया जाता है। वैसे तो हमारी यहाँ की औरत जो है अपने संस्कृति को बचाने के लिए, अपने आप को बचाने के लिए वो ऊपर चढ़ जाती है। वो हालांकि उसको हम सही नहीं ठहराते, लेकिन आपसे वो अलग है। तो ऐसे बहुत ही बातें उन्होंने कही है, जो कि अभी जो पेपर पढ़े उसमें भी ये बात आ गई अपने की स्त्री का सम्मान करना चाहिए। तो ऐसे बहुत ही अच्छा ये अवसर इस टाइम में अपने कॉलेज और ये जो यहाँ के आधा जो प्रधानाचार्य है, इन्होंने अपने को सब लोगों को यहाँ पर मिलाया और सब लोगों को मिला करके एक बहुत ही अच्छी बात यहाँ पर अपने रखने का मौका दिया। इसलिए मराठी में जाते जाते एक बात कह करके मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। जनी हे सुखाचे दिले घेतल्याचे बा अनंत काळाचे नाही कोणी, म्हणजे हे जे काही सर्व विश्व आहे हे सर्व विश्व आपल्या आत्म्यामध्ये सामावलेलं आहे, याचा विचार करून या स्वामीजीच्या विचारावर आपण चलूया। सेन पाठक सर को भी धन्यवाद देता हूं यहाँ पर, और सभी को मैं धन्यवाद देते हुए अपने वाणी को यहाँ पर विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत। जय भारत। Thank you, sir. Thank you for your concluding remarks as a chairperson of this session. I would like to invite our Honorable Principal Dr. Vasant Biradar sir to deliver presidential address. Honorable Principal Dr. Vasant Biradar sir, please. Good evening to all. First of all, as a chairperson of this interdisciplinary international online conference, I welcome and thankful to one and all honorable special invitee of this program and president of Kisan Shikshan Prasarak Mandal, Shri Srirangaraoji Patil Ekambekar Sahib, honorable secretary of Kisan Shikshan Prasarak Mandal, Shri Jnanadevji Jodge Sahib, inaugurator of the international conference, Professor Dr. Sen Pathak from Texas University, America, keynote speaker of this international conference, Professor Swami Jap Siddhanandaji, chairperson of research papers, reading session of Dr. Satish Kadam, research paper readers, Dr. Kavita Tated, Dr. Jyoti Ramod, Dr. Sushama Deshmukh, coordinator of this conference, Dr. Rajesh Mishra, convener of this interdisciplinary international online conference, Dr. More Babruan, and all dear brothers and sisters who are attending this conference online. Vivekananda's contribution of India and the world is countless, especially Vivekananda's thoughts for the youth are very appreciating. Swami Vivekananda is a treasure of motivation and inspiration for all of us. Whether we are students, teachers, common people, or any other professional, he said a lot which can be formatted in very simple questions for everyone. Stand up, be blood, be strong, take the whole responsibility on your own shoulders, and now that you are the character of your own destiny, arise, awake, and stop not till the goal is reached. I say to be good and to do good. That is the whole of religion. Strength is life, weakness is death.
According to Vivekananda, three things are necessary to take every man great, every nation great. Convocation of the powers of goodness, absence of jealousy and suspension, helping all are trying to be and do good. In the way, Vivekananda's thoughts are very inspiring for the youth, so that every year we celebrate birth anniversary of Swami Vivekananda. 12th January is National Youth Day every year. At last, as a chairperson of this international conference, I congratulate one and all who had worked directly and indirectly for the grand success of this interdisciplinary international conference taken by Department of History of Mahatma Phule Mahavidyalaya, Ahmedpur, as well as Global Sanskrit Forum, New Delhi, and Swami Raman Tirth Marathwada University, Nanded. Thanking you. Jai Hind, Jai Bharat. Thank you, sir. Thank you. Now, I'm moving forward towards the last session, valedictory session. I request Dr. D.D. Chaudhary to propose the vote of thanks. Dr. D.D. Chaudhary, sir. Thank you, sir. Honorable Chief Guest, Principal, Professor, Researcher, good evening. I am going to propose vote of thanks. I feel honored to propose this vote of thanks on behalf of College History Department. First of all, I would like to thank special invitee of this conference, Honorable Srirangaraoji Patil, President Kisan Shikshan Prasarak Mandal Udgir, Honorable Secretary Danadevji Jhodge Sahib, Kisan Shikshan Prasarak Mandal Udgir, who gives support and best wishes to organize this conference. Thanks, sir. I would like to express my deep sense of gratitude for chairperson of this conference, our principal and well-known author, Sahityak, Dr. Vasant Biradar, who give free hand to all staff to organize innovative programs, innovative ideas like this conference. I would like to express my vote of thanks to Honorable Dr. Uddhavji Bhosalai, Vice Chancellor, SRTMU Nanded, who gives permission to organize this conference with collaboration of SRTMU Nanded. I would like to express my vote of thanks to inaugurator of this conference, Honorable Professor Dr. Sain Pathak, who shares their views and valuable thought on Swami Vivekananda's contribution for India and the world. He gives, arise, awake, and not to stop till your goal is not achieved. These ideas is very important and relevant today. I would like to express my vote of thanks to Honorable Professor Swami Japasiddhananda, sparing their valuable times for us and gracing this event very nicely. I would like to express my vote of thanks to Dr. Satish Kadam, President, Maharashtra History Conference, who handled the responsibility as chairperson of second session for as a chairperson. He gives and thoughts have motivated of all us. I would like to express my vote of thanks researcher Dr. Jyoti Ramod Pune, Dr. Sushma Deshpande Chhatrapati Sambhaji Nagar, Dr. Kavita Tated Yevatmal, who share their views and research attitude of this subject in this conference. I would like to thank coordinator Dr. Rajesh Mishra, Global Sanskrit Forum, who gives support time to time with us and gave bunch for Sanskrit Forum to organize online conferences of our college. Further, I would like to express my vote of thanks, Professor, non-teaching staff,
attend of this conference. I give congratulations and express my deep sense gratitude for take great efforts to prepare and organize this conference. Dr. B.K. More, head of history department in our college. Next, I would like to thank our technical support service provided this conference, Dr. Prashant Birajdar, Dr. Garje, Professor Ingre, Dr. Chilgar, and also I will thanks anchor Professor Atish Akde, who delivered very special anchoring in this program. I would like to express our gratitude for all known, unknown hands that contribute to the success of this conference. Thanks one and all. I would like to take your leave with feeling happiness and gratitude over to Akde sir. Thank you. Thank you, Akde sir. Thank you, sir. Thank you. All the respected participants who joined this one-day interdisciplinary international online conference. We will conclude this conference with Pasaidan. I request Dr. B.K. More, sir. Ready to earn the lowest spreads.